Good morning, PGTs in Botany, as well as PGT in Zoology, those who have joined in Biology, because in EMRs you have got Biology. Anyway, you must be knowing my as Director in Government of India on deputation, and he belongs, I am very sure that I'm very happy to have my classmate, Professor K.B. Kumar. He has already taken one class. Now I don't want to become a bar between him and you people. So I request Professor Vijay Kumar to start his deliveries. Professor Kumar. Full screen. Full screen is all on. Full screen is scroll here. How about how scroll? हमको पढ़ियो तो सुविधा Okay. Good morning, everyone. Last class we had discussed something. For some reason or other, we could progress only up to 20 questions, though there are around 150 questions. Whatever it is, we will discuss today. We'll be little fast today. I hope you will cooperate and answer the questions very fast so that we can remove, move fast with all the questions. Now, we are dealing with heredity and variation. Now, I suppose we had gone up to 20th question. From 21st question, I will go further. Acha. The question is, can brown-eyed parents have blue-eyed babies? Last question on that page, on that screen, you will find, can brown-eyed parents have blue-eyed babies? If yes, the genotype of parents must be quick. Anyone who can answer? Can brown-eyed parents have blue-eyed babies? Now I will give you a clue here. Blue eye is recessive and brown eye is dominant. So can brown-eyed parents have blue-eyed babies? Yes or no first? Yes, sir. Huh? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, they can have. Yes, sir. So what will be the genotype of the parent? I told you that blue eye is recessive and brown eye is dominant. Sir, C capital B small b cross capital B small b. Very right. I will not discuss much because the both the parents are brown-eyed. They must have capital B, but the child is blue-eyed. So the child must have only small b. So the child can get small b from one parent and small b from the other parent. And this is possible
only if both the parents have small b. If it is capital B, both the parents cannot contribute small b. Now, as I told you, I have to move fast. The term allele was coined by who developed the term allele? Batson and Batson and And Punnett. Batson and Punnett. William Butterson. Batson is, I have written Batson. You can say William Batson. It is one and the same. You tell me it is William Batson. No, the answer is Batson and Saunders. Batson and Saunders coined the term allele. As I told you, we'll move fast because we have to, you can note the answers. The term allele was coined by Batson and Saunders. Now, the principle of independent assortment of characters is provided by, you give me the answer. You can go read the choices and give me the answer. Anyone? None of the above. The principle, None of the above. None of the above. Very right. None of the above, because all the other three options, observation of F1 progeny is tall, appearance of tall and dwarf in 3:1 ratio, that accounts to monohybrid cross, appearance of tall and dwarf in F2 population. Here also it is monohybrid because only one character is considered. In the first 3 points, only one character is considered. That's why the first 3 answers relate to F1 and monohybrid. And the last one, none of the above, is for the dihybrid cross. Next question. The trihybrid ratio 27,999,3331 is obtained because of? There are multiple alleles. Multiple alleles. Okay. Anyone else? Anyone else? 27,999,331. Independent assortment. Independent assortment. Who said this? Avinash. Ye koila eta? Avinash. Avinash. Very good. It is independent assortment. Now, if you remember, last class we had discussed that what is the dihybrid cross phenotypic ratio? Please tell me fast. Tell me fast. Phenotypic ratio, dihybrid cross. Sir, 9:3:3:1. 9:3:3:1. Very good. Then multiply it by 3:1. Last time I had told you 9 into 3 is how much? 27. Yes, sir. Then what? 9 into 1 is 9. Then after 9, what is there? 9:3:3:1. After 9, what is there? In 9:3:3:1, after 9, what is there? 9:3:3:1 ହଉଛି dihybrid cross. 9 ପରେ କଣ ଆସୁଛି? 9:3:3:1 ରେ 3. So you are not answering the very simple straightforward thing. After 9 there is 3. Multiply 3 by 3:1. 3 into 3 is 9.
3 into 1 is 3. So Three. how much? 3. So again, what is the next number? 9, 3. Then Three. again 3. Again 3. 3. 3 into 3, 9. 3 into 1, Yes. 3. 3. Then next 1. 1. 1 in 1 multiplied by 3 to 1. So 3 is to 1, 3, 1. So the ratio is 9, 27, 999, 3331. This is the tri-hybrid ratio. So there should not be any confusion, because dihybrid ratio is 9331. Each one multiplied by 3 is to 1. It gives us the tri-hybrid ratio. Now, next. Here an important thing which you may or may not be knowing. We will stress on this. You must have a clear idea on that. You read the question. Wild genes are, tell me. Wild genes are hello. who is talking? At least switch off your mic. Who is that who is talking? Okay, tell me, wild genes are? Dominant or recessive? Not Either dominant or recessive. So which one? A or B or C or D? Number D, sir. Okay. D. D. Either dominant or recessive depending on Type of mutation. Type of mutation. Type of mutation. What is C? neither Zero con dominant answer nor ଅଛି. recessive Recessive unless there is a mutation. Hela? अच्छा. एटा जानिबा पई मते प्रथमे को वाइल्ड जीन माने कोन? हाँ? Basic जिनसो केते तुमको जणाइबा को चाहूची. Those who are interested, they may know it. Otherwise, you may go on talking among with you in your family or friends or whatever it is. So, Sir, wild gene are natural or non-mutated gene? right. Answer it. Wild genes are? कुआ जा कोथला उतर कोना. These are not mutated gene. These are not? Sir, these are non-mutant type of gene. Non-mutant type of genes. Manoj, Sir. Wild genes are non-mutant genes. Answer is to some extent correct, but that is not the correct answer. Wild genes are those genes which are present in nature, in wild nature. That is the first answer. Then comes, they are not mutated. They are not mutated. Right, sir. Got it? Wild genes are in the wild,
in the if it is a plant, it is in the forest. If it is an animals also, it is in its natural habitat. Before mutation, whatever is there, that is called wild gene. Then, so which one will be the answer? I think it's C, sir. See, neither dominant nor recessive, Dominant. unless there is a mutation. What is D? Either dominant or recessive, depending on the type of mutation. Mutation. And E is either C or D. Acha. Eiti gotte jinso tum kochi, gotte wild gene achi. Ame kohilu, where is the wild gene? In nature? Nature re wild gene rohila. ठीक अच्छी से जो वाइल्ड जीन टा जदि म्यूटेट हे गला तार अवस्था कौन हबो वाइल्ड जीन आउ नाही वाइल्ड जीन पूरा नष्ट हो गला तो मन को कौन आछि सेटा को हां रहिबो ताहले जदि म्यूटेट हे गला भी से वाइल्ड जीन टा रहिबो Yes. एथि पई आंसर वर्तमान को कोटा हबो अच्छा मु आउ टिके बुझे दउची वाइल्ड जीन टा रहिला सेटा डोमिनेंट ना रिसेसिव तमे कहबो किछि नुहो काहे कि वाइल्ड जीन होची वाइल्ड जीन तार किछि चेंज नै म्यूटेशन हला Changes নাই। म्यूटेशन टा डोमिनेंट हबो डोमिनेंट म्यूटेशन हबो ना रिसेसिव म्यूटेशन हबो ना कोटा हले भी हेई पारे हाँ वाइल्ड जीन टा जेतोले म्यूटेशन हबो तारे सेटा कोन सेटा डोमिनेंट म्यूटेशन हबो ना रिसेसिव म्यूटेशन हबो Anything can possible, sir. एनीथिंग इज पॉसिबल वेरी गुड जोटा हले भी हेई पारे अच्छा टॉल आउट ड्वार्फ हमें सिंपल एग्जांपल नबा टॉल आउट ड्वार्फ सेटा कोटा वाइल्ड आउ कोटा म्यूटेटेड कोई परिबो All is wild. टॉल इज वाइल्ड ड्वार्फ इज Mutated. dwarf is mutant not necessarily किंतु गोटे कथा मन रख एटा मल्टीपल आंसर पाई जो म्यूटेशन वाइल्ड जीन्स रे हुए सेटा मोस्टली दोज म्यूटेशंस आर रिसेसिव म्यूटेशन सेति पई तमे कहिलो एंड इट इज राइट टॉल इज वाइल्ड एंड dwarf is mutated okay so एबे मते को आमे कोन कहूचे जीन्स अकर इन डैश कोन फिल इन द ब्लैंक और एलिलीज अकर इन पी रे आरंभ एलिलीज अकर इन पेयर कहूचे पेयर गोटे डोमिनेंट गोटे रिसेसिव किमा दीटा जाको डोमिनेंट किमा दीटा genes or alleles occur in pairs किंतु एठी तमे देखुचो जे गोटे वाइल्ड जीन बिल्कुल डोमिनेंट नुहो कि रिसेसिव नुहो जेतबेला पर्यंत से म्यूटेशन हेनी म्यूटेशन हला परे वाइल्ड जीन ता डोमिनेंट भी हेई पारे रिसेसिव भी हेई पारे वर्तमान को कोटा आंसर Number C, sir. नंबर ई C. डोमिनेंट सी नहीं ई हबो ई हबो सर जेतबेला पर्यंत म्यूटेशन हेनी से डोमिनेंट नुहो कि रिसेसिव नुहो इटा ट्रू ना फॉल्स ट्रू ना नहीं ट्रू डी को जाओ वर्तमान either dominant or recessive depending on the type of mutation तमे कोन कहलो टाल टा डोमिनेंट कहलो ना हाँ. ताले रिसेसिव टा कोडा हला ड्वार्फ ताले इटी वाइल्ड टा कोन हला टॉल Yes. ओरिजिनल टॉल थिला म्यूटेशन हला परे सेटा ड्वार्फ हला सो Right. either dominant or recessive बुझलो कि मने करा हमें धरि नबा
जे ड्वार्फ टा म्यूटेट हला जदि ड्वार्फ म्यूटेट हला कोन हबो वाइल्ड होची ड्वार्फ म्यूटेंट होची टॉल सो either dominant or recessive टॉल जदि म्यूटेशन है कि ड्वार्फ है जी ताले टॉल इज वाइल्ड ड्वार्फ जदि म्यूटेट है कि टॉल है जी ताले ड्वार्फ इज वाइल्ड सो either C or D वाइल्ड जीन रो कोनोसी कैरेक्टर नाही सेटा म्यूटेशन हला पर्यंत सेटा खाली वाइल्ड जीन जेतेबेले म्यूटेशन नहीं जीवो सेतेबेले से वाइल्ड जीन टा डोमिनेंट है पारे रिसेसिव है पारे सो C is possible D is possible से किछि डोमिनेंट की रिसेसिव है न पारे किंबा either dominant or recessive है पारे म्यूटेशन को बेस करी ताले दीटा जाको तार आंसर हो एटा बही गुडा करे नथिबो तमे एटा मने रखिताओ हां एटा स्किप कर दबा नेक्स्ट क्वेश्चन टा काहे कि ना ऑलरेडी हमें पढ़ले अच्छा हो थर्ड क्वेश्चन टा को बोलो मेंडल स्टार्टेड विथ 7 pair of characters. अच्छा 14 अच्छा 7 पेयर ऑफ आउ के गुटे को आउ जड़े को तापर म आंसर ता कहि Understood the last number of characters. C. आउ जड़े को C sir. Yes, sir. 7 pairs Sir. the answer is A large number of characters question ta पढ़ो मेंडल Large number of Started characters with- को 7 pair नहीं थे 7 pair तो नहीं थे सर गुडाए कैरेक्टर रु 7 पेयर से नहीं थिले So. जोठी तांगु से हां केवल 7 पेयर नहीं नथिले गुडाए से एक्सपेरिमेंट करथिले गुडाए कैरेक्टर नहीं करी तादरु शेषरे से 7 पेयर्स को लेले तो केवल 7 पेयर इज नॉट द राइट आंसर फाइनल रिजल्ट्स कोथिरे आसला सेटा होची 7 पेयर ओके नेक्स्ट एटा टिके कष्टटा देखो one pair of alleles shows incomplete dominance खड़े रहते हाँ निकल टिके चिंता करो in a dihybrid cross when one pair of alleles shows incomplete dominance ratio comes to कोटा आंसर होबो 9:3:3:1 तो डायहाइब्रिड रेशियो रे गोटे होची इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छा मते को इनकम्प्लीट डोमिनेंस रो रेशियो कोन इनकम्प्लीट डोमिनेंस रो रेशियो कोन 1:2:1 1:2:1 very correct 1:2:1 एथिरे सबुथिरे 1:2:1 अछि ना केवल तीनटा रे अछि Sir, I think answer will be B, sir. 2:4:2:1:2:1:2:1:1 हां नाइ तमे कहलो जे हाउ तम लॉजिक ता ही देखिबा by my method of elimination d टा काहे के एलिमिनेट हे जीवो कहलो d टा काहे के एलिमिनेट होबो Directly a hybrid cross. डायहाइब्रिड क्रॉस सेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस रो कोनोसी तादरे
देखा जाउनी तापरे ए कोटा देखो ए रे कौन सेटा केमती एलिमिनेट हबो एटा 1:2:1 हां সেটা monohybrid cross রে স্যার এলিমিনেট হবে वेरी गुड एकोटा एटा होची मोनोहाइब्रिड क्रॉस सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डायहाइब्रिड एटा नु डीटा नु डी रे केवल डायहाइब्रिड रेशियो अछि ए रे केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस अछि सो आर दीटा रहला आर दीटा रु 8 बी टा एलिमिनेट हबो ना सी टा एलिमिनेट हबो टिके भाबी करी को को सीटा एलिमेंट हो सर आंसर बी সেইটা हो এলিমিনেট হবে স্যার বি अच्छा मु तुमको इजी गोटे क्लू दउची तमे जान नै परिबो अच्छा सी टा एलिमिनेट हबो बोली तमे कहउचो तमे देखो बी रे केतरा 1:2:1 अछि দুইটা স্যার দুইটা एटा अछि দুইটা केतरा के पेयर रे इनकम्प्लीट डोमिनेंस अछि क्वेश्चन पढ़ो one pair of alleles वन पेयर रो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो केते गोटे पेयर रो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेशियो केते 1:1 हैला ना नहीं yes एबे बुझिलो कोटा आंसर हबो बी रे दुईटा 1:2:1 अछि ता अर्थ सेठी दीटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखौछि व्हिच इज नॉट पॉसिबल काहे कि ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस अछि केवल गोटिए रो सो कोटा आंसर हबो सी C where there is only one incomplete dominance which is shown hella only one incomplete dominance which is shown अच्छा सही जो सीटा को टिके देखो बेसी भीतर को जिबे हां सुनो सीटा को टिके अनाओ 363 121 अछि अच्छा हमरो डायहाइब्रिड क्रॉस रो रेशियो केते 9331 हैला ना नहीं कोन मानचो ना नहीं डायहाइब्रिड क्रॉस रो yes रेशियो होची 9331 अच्छा right वर्तमान 363 रे डायहाइब्रिड क्रॉस रो केतरा नंबर अछि दीटा 3 ही अछि एक अछि कोनटा नाही 9 99 वर्तमान कोन करिवो दीटा 3 ही अछि ताको छाड़ दियो लास्ट जो एक अछि ताको छाड़ दियो 2 या 3 मिसे की ताको 6 रे जोड़ दियो केते हला एबे 9331 हला कि नहीं हला hela na now you see you will find that the ratio becomes 9331 ताहले डायहाइब्रिड क्रॉस रो जो 9331 अछि से 9 रो तीनटा डिवाइड माने चारिटा डिवाइड हेकरी आई एम सॉरी तीनटा डिवाइड हेकरी 1:2 होछि ओटे डोमिनेंट एमसीक्यू जागा सरी गला मत पेपर देते हां अच्छा हाउ Eta, so the correct answer is 363121. Now, next, gametes produced by individual with genotype small a, capital B, capital C are how many? Ketra type of gamete produce habo?
गैस मारो किछि भूल ही पारे गैस मारो हैं अच्छा एटी तुमको क्लू दउची से फॉर्मूलाटा यूज करके दि तीन जण मते आंसर कहले मु सैटिस्फाइड हेबी जे यू हैव अंडरस्टूड ए जो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एठी केतुटा तमरो दिन पेयर अछि कहलो पेयर केतुटा अछि एलिलिक पेयर तीनटा वेरी गुड तीनटा पेयर আছে तीनटा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ये तीनटा भितरु के केतुटा हेटेरोजाइगस अछि केतुटा होमोजाइगस अछि दीटा Dita homozygous, homozygous, gote heterozygous. दीटा होमोजाइगस गोटे हेटेरोजाइगस वर्तमान गोटे फार्मूला तमे नोट कर दियो और मने भी रखो 2 to the power n minus a 2 to the power n minus a हला अच्छा a लेखो x लेखो से जोटा लेखो तमे अच्छा एठी n टा कोन नंबर ऑफ पेयर्स एक्स्ट्रा कोन नंबर ऑफ होमोजाइगस पेयर्स फॉर्मूलाटा कोन कहली फॉर्मूलाटा कोन कहली 2 to the power और n n minus x इठी n टा केते NC sir. 3. 3 अच्छा x केते 2. 2. x2 ताहले 2 to the power केते हो 2 to the power sir 1. 1. 1 आंसर केते 2. 2 sir. 2 आंसर इज 2 बुझी पारलो ना नहीं हाँ हाँ Yes, sir. बुझी पारलो वर्तमान तमे निजो को सैटिस्फाई करिया पई तमे गेमिट कोन हेई परियो कहलो कैपिटल ए कैपिटल आई एम सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एम आई राइट yes sir. Yes, sir. स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ गुटे गेमिट कोन हेई परियो Small a, capital B, small c. Small c. राइट तोले केतरा हला Dita. देटा बुझी गला बे हाँ sir. Yes, sir. हाँ 2 to the Yes, power sir. n minus x fine अच्छा next a mutant allele usually produces कौन a mutant allele normally produces कहि परिबोनी सबुतरे गैस मारिवा दरकार प्रथम रे एटा तो परीक्षा दउनो ना गैस मारो नहीं Sir c. No no enzyme. enzyme at all ना
ସେଇଟା ନୁହଁ। C is not the answer. Answer is D. Answer is D. Any of the above. It may be normal or less sufficient enzyme. It may form non-functional enzyme, or it may not form any enzyme at all. So any of the above. जो mutant gene टा जहाँ हेले भी करी पारे. Put an example लियो. Lethal genes. Lethal genes पढ़ी तो? Lethal genes. Lethal gene टा कौन हो? जे death cause करे. इधर mutation द्वारा है ची. सेटा जो mutation द्वारा है ची. सेटा normal enzyme ना abnormal enzyme किंवा no enzyme जा भी यही पारे जेहेतु से functional नुओ functional enzyme देई परनी किंवा enzyme जमा करे परनी सेति भाई death होती. That is the effect of a mutant gene. Mutant gene may form less efficient enzyme. कौन हला round seed आउ आरटा तार opposite टा कौन round टा कौन dominant ना recessive round टा dominant ना recessive Dominant. round wrinkled kuta dominant Round, sir. wrinkled dominant round Round. dominant Round. wrinkled recessive जेतबेले wrinkled recessive हला तमे कोटा भाबुचो mutated हेतियो mutant gene कोटा रो round रो ना wrinkled रो round mutated gene हेतियो Round, sir. हां Round. round रो माने कोटा wild हेतियो सेटा को बोलते Round, sir. round wild ताले mutated कोटा हला mutated कोटा हला Round. যদি round wild round wild हला mutated कोटा wrinkled is mutated round is wild round टा dominant wrinkled टा recessive wrinkled काई की हला less efficient enzyme round हला normal enzyme हला एई प्रकार जे कोनोसी कारण जोगु से एंजाइम काम न करि पारे कम काम करि पारे किंबा बिल्कुल एंजाइम न होई पारे सेटा होची कारण बाय एन एलिली हला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ी कि मत आंसर दियो. The number of genotypes in every blood group are. केतरा जीनोटाइप्स Yes, sir. B. এটা দুইটা বিটা দুইটা এই বিটা করতে 6. পাঁচটা D. Sir. 3 3 6 Sir, 6. 6 very good. 6. Capital A, capital A, capital A, small a, capital A, capital B, capital B, capital B, small b, empty hekiri. B mana I am telling about immunoglobulin. I, B, I, A. Mo A, B koi jai. Hala, it is 6. A, B, B, then A small a, B small b, then small a, small b. A bhaliya, you have got 6. Next. Which of the following is the oldest to be associated with breeding experiments?
ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए करछि रिमेंबर दिस सबुठु पुराना ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए करथिले कॉल राउटर रिमेंबर दिस एगुडा को मल्टीपल चॉइस रे अछि पारे कॉल राउटर he was working with tobacco plants call router next next question idea of blending inheritance was weakened by कोटा कमजोर करूची blending inheritance कोन जानि छ तो blending inheritance होची दीटा मिसिकरी होची कैरेक्टर एबे हमें जानू छु जे जीन्स आर डिस्क्रीट जो blending inheritance रो आईडिया थिला ताकू किए वीकेन करूची किए ताकू माने नेगेटिव कर दोची blending inheritance anyone वो तो तुम जानी न मु तुम कह दूची it is atavism atavism माने कौन anyone who knows it गोटे कथा देखो जेतबेले गोटे छुआ जन्म होउची आमे को कोन कहूचे छुआर आखी आ बापा भलिया आइची नाक या भलिया आइची पाटी ता भलिया आइची आमे डिस्कस करू अच्छा एटा सुनिचो कि जे यार आखीटा तार शांत मां शांत बापा अज्जा आई भलिया हेची एमती कथा हो ना हो हैं होची ए भलिया होची ताले दैट इज कॉल्ड अटाविजम माने गोटे कैरेक्टर जनक पाखरे अछि तार डायरेक्ट पिला माने को पाखरे नाही किंतु नाती नातुणी पाखरे अछि सो हठात गोटे वंशर पुराना कैरेक्टर जदि परे बाहरला डायरेक्ट पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आसनी किंतु ऑफस्प्रिंग देकिरी तांको जनरेशन को जाउची दैट इज कॉल्ड अटाविजम अटाविजम रो माने कोन एई भलिया कलर दुई जनरेशन पूर्वरु थिला एबे पुणी आसला आ ता मझिरे एई कलर ता नथिला ता अर्थ पूर्वरु जोटा थिला सेटा नष्ट हेनी बिल्कुल सेटा जेमिति सेमिति अछि दीटा जनरेशन परे पुणी से कैरेक्टर आसला दैट इज नोन एज atavism in English it is called grandfather's nose बहिरे गुड़ा लिखा है grandfather's nose माने grandfather's nose is seen in grandchild that is atavism serendipity is हठात गोटे किछि डिस्कवर कर दवा नुआ जिंस लाइक तमरो पेनिसिलिन हठात जना पड़ला टेलियोलॉजी एई जो कामटा एइठी पई हेछि कनेक्टिंग लिंक होची तमरो जूलॉजी रे जो इवोल्यूशन रे पढछो बर्ड रो रेप्टाइल रो लिंक होची एया दोज आर कनेक्टिंग लिंक्स दीज आर ऑल डिफरेंट
Atavism is a clear proof that a character which was existing few generations back is coming back again because that character is not contaminated, nor there is any fusion. It is repeating itself once again. That is atavism. So blending inheritance is countered by we are stopping it. There is some issue. Light कम होची better. बड़ दिश आमको चिंता नहीं तांको माने देखु मोबाइल रे देखु ना भाईना मोर रूम रे टेबल आनला बायोलॉजी लैब रो ए पिलाम को के आने दियो ट्रेनिंग अछि मो सेटे बसिबे हम So now let us start again. Hey. Move on. इटा move करनी please someone is talking ना ने पार्टिसिपेंट म्यूट कर देले पुणी से माने कहिबे ना ऐसे इंज बाहर
किए म्यूट किए हाँ someone is talking please don't talk in the middle acha now ABO blood group is an example of this is a thing which zoology participants can also answer. Sir, both Multiple A and allelism. C, sir. Sir, both A and C. Multiple allelism. Huh? Sir, codominance and multiple alleles. Multiple allelism. Codominance and multiple allele or multiple allele. Multiple allelism. And the codominance Multiple and allele. multiple alleles. Both, sir. Anyone else who wants to answer? Both Multiple A and allelism. Remember this. The answer is Multiple. no, sir, codominance D. and multiple. Both A and C. That is codominance and multiple alleles. Because what is codominance? Both the dominant genes express together. Codominance is here the A blood group and AB. When they are together, they form AB blood group. This is codominance. Why multiple allele? There are 3 alleles for the same gene. That is why it is called multiple allele. So both codominance and multiple allelism. So ABO blood group is an example of codominance and multiple allelism. Next, a test cross of capital A small a, capital B small c, small b, capital C small c produces how many phenotypes? कौन ये चाल क्षीर चाल है बिना चाल कौन किए कोई परियो नहीं अच्छा यार आंसर अच्छा मत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे रेशियो कितने टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे टेस्ट क्रॉस रेशियो कितने हाँ 1:1. 1:1 वेरी गुड डाइहाइब्रिड क्रॉस रे टेस्ट क्रॉस रेशियो कितने 1:1 ना कितने Yes, sir. Right. yes sir very good ताहले 80 same formula apply करो 2 to the power n minus x 4 over sir answer D. right केतुटा ये अच्छी कौन कहलो केतुटा कौन हेटेरोजाइगस अच्छी दीटा Yes. टोटल जीन पेयर केते टोटल 3. पेयर होची 3. तीनटा Tinta. ताहले n to the power 3 minus होमोजाइगस केते एक so 10 to the power 3 minus 2 n to the power 3 minus 1 is equal to 2 to the power 3 minus x is equal to kete 2 to the power 2 to the 3 power 2 minus 1 3 minus 1 is 1 is equal to 2 to the power 2 2. that is 4 Yes. is it okay Yes. Yes, sir. that wrinkle seals are produced because of it is data question same he jaichi माने data answer same he jaichi C and D ए तीनटा भितरु को कोटा आंसर
already our answer ta mu koi deis. Koi pariboni? अच्छा मते कुह राउंड एंड रिंकल्ड भितर कोटा डोमिनेंट Round, sir. राउंड एंड रिंकल्ड भितर कोटा डोमिनेंट Round. राउंड टा डोमिनेंट अच्छा वर्तमान कुह कोटा म्यूटेंट बोली भाबुछो रिंकल्ड ना म्यूटेंट जीन कोटा रिंकल्ड ना राउंड म्यूटेंट जीन कोटा रिंकल्ड ना राउंड Wrinkled. mutant gene wrinkled is mutant and round is wild which is dominant ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ କୋଉଟା ଆନ୍ସର କୋଉଟାରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ସିଡ୍ ରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ନା wrinkled seed ରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି wrinkle ରେ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ CD ର ତ आंसर समान अछि हां सी जोटा कुह मु कहि देली आगरो तीनटार भूल रे दीटा जगह एका ही जेछि गोटे मोर हवा कथा गोटे लेस हां ए ना बी ना सी ना डी ए ना बी ना सी डी मु कहि दोछि केमति गेस करिवो देखो वाइल्ड लिली होची राउंड बिकॉज दैट इज नॉर्मल म्यूटेंट टेलिली नो फंक्शन नैतिले हुए तो सीड ही न होई थांता सीड होउची किंतु माने स्टार्च होउची किंतु कम होउची सेति पई सीड ता रिंकल्ड होउची सेति पई आंसर कोन हबो लेस सेंस एफिशिएंट फंक्शन कम स्टार्च प्रोड्यूस सेति पई रिंकल्ड होउची जदि बिल्कुल फंक्शन न थांता ताले सीड बिल्कुल हेई न थांता से सीड डेवलप ही कर न थांता अच्छा नेक्स्ट एटा ये होनी चेंज हवा कोन करियो पड़ियो एठुटे कोन करथिले हाँ अच्छा number of laws formulated by Mendel केतरा चारटा सर हाँ Sir, 4. और भूल नुह किंतु ठीक होची 3 काहे कि लॉ ऑफ प्यूरिटी गैमेट तमे जोटा धरुचो सेटा एक्चुअली एग्जिस्ट करूनी तमे एनसीईआरटी बही देखियो तीनटा अछि सेति पय मु क्वेश्चनटा देली परीक्षा रे जदी पढिबो तीनटा पिला को सिखेइबो बेटर जदि भी किछि एपट सपट हुए ताले तीनटा को भी क्रेडिट दिया जीवो 4 3 एही भलिया माने लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ प्यूरिटी गैमेट प्यूरिटी ऑफ लॉ गैमेट फैक्टर चारटा हबो हां कोनटा को चारटा कोन लॉ पेयर फैक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट प्रथमटा कोन लॉ पेयर फैक्टर पेयर फैक्टर कुठी अछि देयर इज नो सच लॉ
The laws are three: law of dominance, laws. Who violator deji? Trumens. Who? Huh? Trumens. Elementary biology. Trumens. Truman. Truman टा follow करछो. Law of ये तमरो NCERT textbook रे कौन अछि? It is three. Remember that. It is three. It is three. Follow. Please follow NCERT textbook or your CHSE board textbook. Don't follow other books as far as examinations are concerned. Now, you are dealing with CBSE syllabus, so follow the NCERT textbook. Next quote. लंबा क्वेश्चन टा तबे पढ़ी किरी a brown-eyed man with dark hair marries a woman with blue eyes and dark curly hair. तांकर चारिटा छुआ ले. What is the genotype of children? इटा elimination रे आंसर टा बाहरियो. भीतर को जीवा दरकार नहीं. Clear cut अच्छी. टिके चिंता करो न कोई परले मत संगे संगे कहबो मु आंसर तुमको एनालाइज करके कह दे. जल्दी मु कहि दउची तुम धरि परियोनी. देखो आंसर एटा डायहाइब्रिड क्रॉस ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलो. एतिक मते को डायहाइब्रिड ताहले वर्तमान चारटा जगह चॉइस देखो कोटा आंसर हो. कोटा कोटा आंसर है पारे. एथुरु दीटा ही आंसर है परिवो. आउ दीटा है परिवोनी. क्विक मु कहि दिए आई के दीटा है परिवोनी. देखो आंसर एटा देखो प्रथम रे कोन लिखा है एजिटे सर रमेश सर पठिथिले तो हो ठीक है मो दीटा क्लास रे लगातार अछि. क्लास पीरियड रो असुविधा मु एजिटे क्लास नहीं. प्लीज म्यूट योर माइक. अच्छा मते कहले प्रथम टारे कोन अछि? कैपिटल बी स्मॉल बी. अच्छा ए रे. अच्छा सी रे कोन अछि? कैपिटल बी स्मॉल बी. एटा होछि डायहाइब्रिड क्रॉस. जदि एटा डायहाइब्रिड क्रॉस गोटे ऑफस्प्रिंग रे गोटाई जीन हे परिबो की बी एंड देयर इज नो आर देयर. बुझी परलो ना नाही. ए रे प्रथम चाइल्ड रो कैपिटल बी स्मॉल बी. सी रे प्रथम चाइल्ड रो कैपिटल बी स्मॉल बी. ता अर्थ इति केवल बी जीन टा रहिछि से सेठी आर जीन नाही. This is not possible in a dihybrid cross. So A and C are eliminated. तापरे आउ दीटा रहे B and D. B and D रू निश्चित भाବରେ B ही आंसर. काहे कि तांकर कैरेक्टर फादर मदर रो अलगा अछि. एटा होमोजाइगस कंडीशन दीटा जाक देखोची डी रे. किंतु ऊपर देखो ब्राउन आईज डार्क हेयर एंड blue eyes curly hair, so it must be heterozygous. So the answer is B. Abesi avitru jibani auri bahut achi. Now incomplete dominance was discovered by incomplete dominance was discovered by Hey sir, Correns. Correns, very good. Next. एटा मो जो फार्मूला कहथिली तादरु बाचकिर को तार आंसर ता ए मेंडलियन एक्सपेरिमेंट केते दूर बुझिछ मु कहि दउ.
एटी फॉर्मूला भी दरकार नहीं तमे इजीली कहि परियो A Mendelian experiment consisted of breeding tall plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of it were short. This suggests that the genetic makeup of tall plant can be depicted as tall plant. What could be the genetic makeup of the tall plant? Is it A, sir? Acha, not A. How to get trial new? देखो टॉल टा डोमिनेंट ना नहीं मते को टॉल टा डोमिनेंट वायलेट टा डोमिनेंट हैला ड्वार्फ टा रिसेसिव आ कोटा व्हाइट टा रिसेसिव अच्छा ऑफस्प्रिंग्स रे कोन आसला the progeny bore all violet flowers but almost half of it were short. Violet flowers जदि आसला ताले अद्धा जदि short हला ताले आंसर ता कोटा हबो The answer will be C, sir. C, very good. काहे ना C नहले तमर सबु violet केबे आसबोनी बुझलो टॉल प्लांट रो कैपिटल W किंतु ड्वार्फ रो अलगा रहिबो हेले C हेई परिबो हेले ही तमर से रेशियो आसबो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू द आंसर sickle cell anemia glutamic acid is replaced by valine and the code is GUG eta khali monne rakhta ho it is only informative answer GUG is the codon that is used for sickle cell anemia next answer ta tame jaldi kuo zoology friends please answer this question if you know zoology question friends fruit fly Drosophila completes its life cycle in the answer is 7 days Drosophila completes its life cycle in 7 days. Who is the scientist who used Drosophila for his genetic experiments? Morgan, sir. Morgan, very good. Now he got Nobel Prize for his chromosomal theory of heredity confirmation. Bateson and Punnett gave it, but confirmation was given by Morgan. अच्छा एबे एबे देखो next question this question
is already set in examination? PMT, pre-medical test. Answer the question. The segregation. Segregation. A na, B na, C na, D. The 3:1 ratio, sir. 3:1. प्रथमे मते गोटे आंसर को 3:1 कहलो जे चिंता करो इटा डाइहाइब्रिड ना मोनोहाइब्रिड Dihybrid, sir. डाइहाइब्रिड हेले तो 3:1 हे परिबोनी हेला डाइहाइब्रिड रे 3:1 हे परिबोनी ए हबो सेटा तो डाइहाइब्रिड किंतु प्रथम लाइन टा क्वेश्चन रो पढो parental type अधिका हबो higher number of parental types राइट सी हबो आंसर काई की ना Mendel's laws are valid only when genes are located on homologous chromosome and are on separate chromosomes, not on the same chromosome. Here, the R and Y are located on the same chromosome. If they are on the same chromosome, they can be separated only when there is crossing over, because they are linked with each other, and they can be separated only when there is crossing over. So crossing over is less if linkage is more. The statement that located very close indicates that they are closely linked. So closely linked means recombination chances or crossover chances are less. So there cannot be higher number of recombinant types, but there can be higher number of parental types. Parental types are higher. That is the answer. Because of linkage and less crossing over, since the genes are located on the same chromosome. The next question is very, very important for your knowledge. You must know this if you are teaching genetics at any level. Any idea about this? no sir No idea. Okay, carefully listen to me. नहले बुझिबाटा टिक्के इटा मुश्किल हो. अच्छा, आमे वाइल्ड जीन कथा चिंता कले ना नहीं? चिंता कले वाइल्ड जीन डोमिनेंट ना रिसेसिव ना किछि भी न होई पारे, डोमिनेंट भी नो रिसेसिव भी नो, जेतोळे पर्यंत तार म्यूटेशन हेनी हला. वाइल्ड जीन रो जेनेटिक्स रे गोटे सिंबल अछि. Anyone who knows it? Anyone who knows what is the symbol used for a wild gene when it is not mutated? Plus. Very, very good. Plus is the sign. Plus is the sign for wild gene. So wild gene is plus. Acha. Wild gene ta तमरो म्यूटेशन हबो. म्यूटेशन जेतबेले हबो से म्यूटेशन टा जो म्यूटेटेड जीन टा डोमिनेंट हबो ना रिसेसिव हबो ना कोटा हेले भी पारे. जेतबेले म्यूटेशन हबो म्यूटेटेड जीन टा डोमिनेंट हबो ना रिसेसिव हबो ना कोटा हेले भी पारे. both are dominant.
जोटा हेले भी यही पारे सेथिपई मु कहिथिली जे म्यूटेशन में भी टुवर्ड्स ए डोमिनेंट जीन और it may be towards a recessive gene hela mutation ta towards a dominant gene or a recessive gene mone karo गोटे डोमिनेंट जीन अच्छा एठी जो आमे चारटा सिंबल देखुछु से चारटा सिंबल तमे मते कुओ से चारटा सिंबल तुमको कौन देखौची एठी आई एम सॉरी हाँ चारटा सिंबल रे डोमिनेंट कोटा कैपिटल बी ना स्मॉल बी डोमिनेंट नहीं कोटा डोमिनेंट कैपिटल बी ना स्मॉल बी Capital B. कैपिटल बी इज डोमिनेंट सेठी प्लस साइन की माइनस साइन प्लस साइन नहीं अच्छा स्मॉल b is recessive that is very clear a and b are very clear next कौन लिखा है स्मॉल b plus and capital B plus तार मानेटा कौन एतिकी बुझी गले तमरे एतिकी बुझी गले तमे आंसर ता जानि दिबो अच्छा plus is the sign for what plus is the sign for wild gene आमे आउरी जानिले जे वाइल्ड जीन टा म्यूटेशन जतबळे हबो सेटा गोटे डोमिनेंट जीन हे पारे किंबा रिसेसिव जीन हे पारे जेतेबेले म्यूटेशन टा गोटे डोमिनेंट जीन को फॉर्म करिवो सेटा या भितर गोटे सिंबल अछि जोटा के सेटा देखेबो कोटा कहलो कैपिटल V प्लस जदी म्यूटेशन टा रिसेसिव जीन हबो ताले को सिंबल देखेबो स्मॉल v प्लस बुझियला ना नहीं बुझियला जदी कैपिटल V प्लस देखा जाउची देखिलो तमे ता अर्थटा कोन बुझौची तुमको डोमिनेंट कैरेक्टर म्यूटेड डोमिनेंट ता रिसेसिव थिला ना डोमिनेंट थिला ए जो कैरेक्टर ता रिसेसिव थिला ना डोमिनेंट थिला डोमिनेंट थिला सर डोमिनेंट नहीं कैपिटल V प्लस जदी हला वाइल्ड टा कोन थिला कैपिटल V प्लस रे वाइल्ड टा कोन थिला टिके कूलली चिंता करो एठी मॉडिफाइड जीन होची म्यूटेटेड जीन होची डोमिनेंट ताहले वाइल्ड जीन टा कोन if mutated gene is dominant wild gene टा कोन recessive if mutated gene is recessive wild gene टा कोन डोमिनेंट ताहले ड्रोसोफिला रे मते कुओ वेस्टिजियल विंग टा डोमिनेंट ना रिसेसिव रिसेसिव आंसर टा कोटा मते पुओ तापरे आवतरे तरे स्मॉल b प्लस ताले एटा होची तमर रिसेसिव जीन आ तार वाइल्ड जीन टा कोन तुमको इमेजिन करियो पड़ियो v प्लस स्मॉल v प्लस जदी वेस्टिजियल है कि रिसेसिव हला स्मॉल b तार वाइल्ड जीन टा कोन हबो वाइल्ड जीन टा कोन normal wing vestigial wing is small v plus और plus होची normal wings जदी v plus mutation नहीं थांता ताहले capital V plus ताहले dominant टा होची v plus और wild gene टा होची एक क्षेत्र रे recessive रिसेसिव टा जदी डोमिनेंट हेतांता ताले कैपिटल V प्लस हेतांता जदी रिसेसिव डोमिनेंट टा रिसेसिव हला सेति पई स्मॉल v प्लस हला व्हिच इज
A vestigial wing. So answer ta iti kono? Small v plus, Yes. which is a vestigial wing. I hope the zoology friends know it, and if they do not know, if they are paying any attention, they can also understand it. Acha. Eta bhalle ki tome author study kole bujhi dei paribo. Here how basic time nai. How next question ta we have already answered. ऊपर क्वेश्चन टा छाड़ दियो सेकंड को आसो सेकंड क्वेश्चन Punnett square. Punnett square, sir. Punnett square. How kiye? Anyone? The answer is fourth line. Last class रे इतने समय नहीं कि मु बतैली जे fourth line रे तमे genotypic ratio और phenotypic ratio easily जानी परिवो 1 to 1 2 4 2 1 to 1 हाँ ताको multiply करके fourth line रे easily जानी परिवो. That is fourth line is the answer. Next इटा aims रे पढ़तिला question. Number of genes between them. जानना सर. अच्छा मत गोटे कथा कहल तमे जो जेनेटिक्स पढ़ुथलो पीजी रे को बही फॉलो करथलो जणे दी जणे मते को रेफरेंस बुक कह दियो टेक्स्ट बुक कहया दरकार नहीं मु जानि परछु टेक्स्ट बुक कोन कोन पढ़थबो हां रेफरेंस बुक कौन बही पढ़ुतले गोटे जोटा हेले सुनिछ गोटे बल बहीर ना कहि दियो हां जोटा बहुत फेमसली यूज हुए पीजी लेवल रे को बही सेटा हाउ तमे हुए तो पढ़ी नथिबो मु कहि दिए इट इज स्ट्रिक बर्गर बही जदि तमे देखिछो किंबा केतेबेले सुजोग मिलले देखो सेतरे कोनोसी जगह रे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ए सब यूज होइनी केवल प्लस इज यूज्ड एंड द v plus ए बळिया. So wild and mutated genes सेतरे यूज होइछि. Okay, forget about it. Now crossing over मपा जाए by crossover value माने which is usually measured in percentage केते परसेंट नुआ बारला मने करो गोटे क्रॉस रे एतिकी परसेंट round yellow wrinkled green. Now round yellow wrinkled green normal थिला ताकू सबु क्रॉस कला को सबु राउंड येलो होला ताकू सेल्फ करिवारु 9331 नो आस्करी अलगा रेशियो आसला ताले राउंड येलो wrinkled green जदी अछि तमरो ओरिजिनल राउंड ग्रीन एंड wrinkled yellow राउंड ग्रीन केतटा बाहला तार परसेंट केते that is the crossover value. सही बोली wrinkled yellow केतटा बाहरला
total ru tar percent, that is crossover value. So distance between two genes जोटी crossover value बेसी आसबो सेठी distance दूर, crossover value कम आसिले distance टा पाख. जदि crossover value बेसी जीन गुडा को दूर रे अछंती आ crossover value जदि कम आसिला ताले जीन गुडा को पाखरे अछंती. Next question. पढ़िकर को Polygenic inheritance. polygenic inheritance. Very good. It is okay. Next question. Please, are you teachers? I am ashamed. Are you teachers? I wish that the type of teachers some of you are, your children should get that type of teachers, so that they can become IAS officers and very big scientists and doctors and engineers. If you cannot conduct yourself, what you will teach to students? I'm sorry, I normally do not lose my cool, but what is this? In my entire career, this is the only 2 classes where I am getting very least response. I fail to understand what is wrong with me. And you even forget to switch off the mic and talk among yourselves. If you are not interested, at least switch off the mic and be there. You switch on the mic, talk among yourself, in your family, your friends, and other things. And at least those few teachers who are interested, you are also disturbing them. Please learn these things. And for your children, you go to Akash Institute, other institute to make them doctors and engineers. But you cannot conduct yourself as a teacher. It is very unfortunate. So let's come back. Which is correct about traits chosen by Mendel? The Sita. Right, Sita. Besi aw samay dei paribani gote pore gote chaliba. Mendel's law of independent assortment holds good for genes situated on the Kono? Mendel's law of independent assortment holds good for the genes present on the homologous chromosome. Homologous na non-homologous? Homologous chromosome. Non-homologous chromosomes. Kainki koilo? Independent chromosome rohele hi semane independently assort. Acha, P ro chromosome number kete koilo? Ketra pair? P plant re ketra pair?
P रे chromosome number केते? हाँ? Chromosome number केते P रे कोई परियोनी? Any one? 14 sir. केते pair? हाँ? 7 14 Seven. Very 7 good. pairs. 7 pairs. आउ से जो सातटा कैरेक्टर नहीं थिले सातटा जाको कैरेक्टर सातटा अलगा अलगा क्रोमोसोम्स रे थिले सेति पई तांकर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ता हला जदि से माने अलगा अलगा क्रोमोसोम रे नथांते ताले से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आनी पारि नथांते मो आगुरु गोटे क्वेश्चन रे कहली से गुडाए कैरेक्टर रे आरंभ करथिले केवल सातटा को पहुंचले काहे कि ना सातटा क्रोमोसोम रे तांकर सही रिजल्ट आसला जेहेतु से सातटा जाको कैरेक्टर अलगा अलगा क्रोमोसोम रे थिला नेक्स्ट इट इज वेरी इजी Incomplete dominance. incomplete dominance very good next नॉर्मल प्राइज किए पाइतले Morgan. The answer is Morgan. If I remember correctly, he got the Nobel Prize in 1936. Sutton and Bovary khali kohithile je they are arranged on the chromosome, but it was experimentally proved by Morgan using Drosophila. Drosophila was the material that was used by Morgan. Now next is very simple question, but maybe tricky. Next question ta kono last D rahuche phenotype 4 genotype 9 hoy paribo Answer D sir. very good answer is D kemti charita phenotype kono 9331 charta phenotype 9331 charta phenotype ketura genotype nota kemti 121 242 121 121 tinta 242 tinta 121 tinta 3 plus 3 plus 3 is 9 this is the way very good next Pleiotropy. Pleiotropy very good Pleiotropy. next Konta So D then. All the recombination frequency All of the above. crossover All of the above, sir. all the above tinta jako saman and I told you already that it is used in percentage next is very important Morgan unit. Morgan unit very good and it is also called centimorgan Morgan. centimorgan
ता ऊपरटा आंसर करो सभा तळटा छाड़ दियो ऊपर दुईटा आंसर करो 3टा sir. तीनटा वेरी गुड तमे काउंट करके देख परिबो 3 नाउ नेक्स्ट The location of pod. location of pod Pod. is right answer next The seed answer. Qualitative or quantitative? polygenic inheritance Yes, sir. is quantitative because माने गोटे वाइड रेंज ऑफ माने वेरिएशंस आसीबो जोटा कि टिके स्किन कलर इन ह्यूमंस इज पॉलीजेनिक कैरेक्टर आउ पेरिकार्प कलर इन व्हीट इज पॉलीजेनिक व्हीट पेरिकार्प कलर इज द प्लांट एग्जांपल ऑफ polygenic characters. Polygenic character is mostly quantitative, it's not qualitative. Next. That 25%. Right. 25%. 3:1. Hella. Percentage of pure homozygous individual in F1 generation is 25% or 50%? Tell me. अच्छा monohybrid crosser ratio कितने? 3:1. 3:1. Genotypic ratio कितने? 1:2:1. 1:2:1. 1:2:1. तादर 1 टा कौन? 1 ला Pure homozygous tall. pure tall. Homozygous tall. आउ आरो 1 टा कौन? Homozygous dwarf. Dwarf. Question कौन? 2 pure homozygous individual. कितने हो? 50%. 50%. देखो आमे तो ए भलिया होचो तमे भी नुहो मु भी एमती हुए एटा जो आमे आंसर करिया रे ये करचो मु देखिछि बहुत पिलांको से माने एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे ये रे आंसर करकी पूरा कॉन्फिडेंट थिबे जे मु जहा आंसर करछि ठीक करछि किंतु गुडाए क्वेश्चन मिसलीडिंग थिबो से पचारला होमोजाइगस इंडिविजुअल हमरो संगे संगे मन पड़ जीवो 3:1 सो होमोजाइगस इंडिविजुअल 25% किंतु इट इज 50% एगुडा को पिलां को तमे सिखेइबो whether you teach them personally or in the class you learn them make them learn Prophase 1 in meiosis. prophase 1 in meiosis हला को स्टेज रे लेप्टोटीन जाइगोटीन को स्टेज पैकिटिन वेरी गुड Angstrom. आंसर मु ऑलरेडी कहि देछि Percent. right it is percent of crossing over केते परसेंट रिकॉम्बिनेशंस बाहरिले सेटा होची आंसर अच्छा बॉम्बे फिनोटाइप सुनिचो हाँ सर हाँ बॉम्बे फिनोटाइप टा इतरे टाइम वेस्ट नबानी बॉम्बे फिनोटाइप इज मोर क्लोजर टू O
कहीं माने इठी एरो जो ग्लूकोजामिन की माने जो सुगर दीटा हुए ए द्वारा और बी द्वारा सेटा एथरे हुए नी एच अन्य टाइप रो गुटे प्रोटीन हुए नाउ सेठी पई you can say that it is more closer to O, but it is not compatible to any of these. Next, এটা देखिवा केते दूर आंसर करि पर कोटा आंसर कौन 50%. A couple has 50%. 50%, right? Always the chance of a son or daughter is 50% only. Fine. एबे केतरा स्किप करी करी जीवा अच्छा लास्ट क्वेश्चन टा इथे आंसर करो आइया को मन भी रखो कौन टा आंसर कहि परियोनी मु कहि दउची आंसर होची डी लास्ट क्वेश्चन रो आंसर होची डी एक्चुअल रेशियो मेंडल जो आस्तिला जो डायहाइब्रिड क्रॉस रे 9.8 3.2 3.4 1 ताकू से अप्रोक्सीमेट करिकी कले 9331 that was the माने turning point of his discovery. Had he not done that 9331 ratio की किछि हमें आज भी जानी पार नथांदे से 9.8 को 9 कंसीडर कले 3.2 को 3 कले ठीक अछि 3.4 को 3 कले ठीक अछि किंतु 9.8 को से 10 न करिकी 9 कले that was the brilliancy of Mendel's approximation 9.8 3.2 3.4 1 एबे अच्छा एगुड़ा सब आमे करी देइछे हाँ लास्ट क्वेश्चन है Last question. How many types of gametes can be produced by a diploid organism
who is heterozygous for 4 loci. Go jaldi. Sir, bolle. 16. 16. Huh? 16. केमती बारला? Sir, 4 different 4 माने 4 heterozygous sir producer 4 loci. सुनो तार आंसर सेमिति नुह 2 to the power n minus x 2 to the power n टा केते इठी केतरा pair of genes 4 minus Four. केते 4 minus 0 homozygosity किसी अच्छी की 0 0 so 2 to the power 4 minus 0 केते आसबो 2 to the power 4 केते 16. 16. 16 right so I asked you to answer this question just to verify whether you are using that formula or not so please use that formula so that there cannot be any mistake अच्छा एटा तमे जानी छो but still then कह दियो जल्दी first Last D. last D De Vries, Correns and Chemark. Next, I will move very fast. Now, next second right answer color. Chromosome maps and genetics map were first prepared by Sutton and Bobby. no, they said that genes are located on a chromosome. Sir, last one. Morgan gave the experimental proof Last one, sir. and got the Nobel Prize. Maps were created by whom? Anyone? Sturtevant. Sturtevant, 1911, was the man who first made genetic map by crossing over frequency or percent of crossing over. The distance between the genes is measured by map unit, which is centimorgan. Okay. Next. अच्छा एक क्वेश्चन टा देख लो टॉप टा कौन लिंकेज पे कोटा सुटेबल
B. Huh? The suitable one is B. Kahiki na B re se mane original form re capital A, capital B, capital A, capital A, capital B, capital B, और small a, small b ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କ୍ରସିଂ ଓଭର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ସ୍ମଲ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ସ୍ମଲ ଏ ଏକାଠି ଆସିବେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେବଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫର ଲ ଟୁ नो what is the extent of linkage. Next. And these first two questions here must be well answered by our zoology friends. Now, for both the cases, the answer is all of these. The first question, alkaptonuria, albinism, cystic fibrosis, these three are recessive autosomal genes. And the next three, polydactyly, Huntington disease, phenylthiocarbamide testing, all these are dominant mutations. Now, they are the dominant mutations. We could have discussed, but there is no time to discuss all those things. Acha. এইটা উপরটা কইল গ্যাস মারিকি গ্যাস মারলে ভুল হবে অবশ্য দেখো Tyrosinase is the answer. Tyrosinase is responsible for melanin formation that gives us skin color. Now, it is Delhi to Didi Dagare Podichi. Question. Not melaninase, it is tyrosinase. Tyrosinase the nahi, tahle you will get albinism. ऊपर क्वेश्चन टा आंसर करो ऊपर क्वेश्चन आओ लास्ट क्वेश्चन है दीटा आंसर करो
Gametes are never hybrid. Huh? B. B, very good. Segregation. Segregation. Someone said, huh? Segregation. That's right. First one is segregation. That's why I said that this there is no law called law of purity of gamete or law of pairs of gametes. It is law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. And this question was asked in AIMS examination. Now, 23 pairs of chromosomes in human can give rise to how many combinations? I am giving you the answer. It is 8.6 million. The formula is 2 to the power number of pairs. 2 to the power number of pairs. Now you will get 8.6 million if you calculate 2 to the power 23. That is the answer. Remember this. Any number of pairs. 10 pairs 2 to the power 10. 7 pairs 2 to the power 10. That is the number of combinations. Second question to answer karo. Second and third. Second question, I am giving you the answer. The answer is Colreuter. I told you Colreuter was the first person to start these experiments, and he has also worked with tobacco plants. And the third question answer is genes located on the same chromosome. That is the answer. If they are present on the same chromosome, then they are linked and there cannot be independent assortment. So A is the answer. I gave this question because it is set in CBSE exam. This is also a CBSE question, first one. Answer that one. C for starch branching enzyme. First question, the answer is starch branching enzyme. I told you that wrinkle seeds are formed because of less formation of starch. And here the mutated gene is modified. And here the starch branching enzyme is absent. So when starch branching enzyme is absent, starch is not formed properly. That's why you get less starch and the seeds become wrinkled. Now, answer the last question. I am asking you this because it is set in Orissa JEE. Last question, and that will be the last question for today's class also, because you are already 11 and you will take 15 minutes
gap, and my friend who will take your next class has already come. He is also my classmate. The answer to the last question is A, because polygenic character is controlled by multiple genes, not multiple alleles. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Now, one more thing, you can note my phone number 88951 88951 44667 8894 88951 88951 44667. Any doubt on any question, not only genetics, anything, you can WhatsApp to this number 88951 44667. And I hope you remember my name, K. Vijay Kumar. Okay, thank you very much. Well, Great teacher.
Good. Welcome, friends. I am B.K. Chaudhary. Professor Vijay Kumar might have told about me. My task is to discuss some multiple choice question. At the beginning, I should tell you what sort of this MCQ, multiple choice questions may come, usually comes in the exams. One is question mark question. For example, which is not a symptom of microbial infection, like converts milk to curd, decomposer, causes infections. Just I am giving an example. Like this, 4 multiple choices will be given. That is one sort of type. Another is multiple choice question, maybe completion type questions, like the characteristic of living organism is respiration, response to stimuli, reproduction, internal environment remains constant. Like that, you have to choose the answer. This may be another type of multiple choice question. Maybe another type of question nowadays being asked, which is a correct statement. For example, 4 statements will be given. The candidate has to choose which one is a correct statement. Another type of question may be find the correct order. For example, in the ascending order on the thalamus of flower, what are the organs in the ascending order on the thalamus of the flower? Calyx, corolla, androecium, gynoecium, maybe it is being shuffled, A, B, C, D is given. That may be a type of question. Like this, I have set certain questions from chapter reproduction in flowering plants. So these are the 4-5 types of questions, multiple choice questions are being asked in the CBSE exam. I have prepared some questions. Maybe from the syllabus, only from your book. This is your book. This biology book. And from this book, I have, from that chapter, I have selected certain points and set questions. For example, nearly 55 to 60 questions I have prepared. We'll discuss in these 2 hours. This thing, these 55 questions. That is sexual reproduction in flowering plants. That is the topic. Sexual reproduction means sexual reproduction is a process by which always 2 reproductive units are being produced. One is male gamete, another is a female gamete. So first question is, the end product of sexual reproduction in flowering plants are, end products of sexual reproduction in flowering plants are gametes, spores, seeds, sporocarps. End product. So these are the 4 choices. Always choices should be like this. Never given none of the above or all of the above. That is not given. Never to be set in the exam. So this is a very simple question. The end products of sexual reproduction in flowering plants are when 2 gametes fuse. Fusion product is known as the zygote. Zygote is the post-fertilized product. So that is the answer. End products of sexual reproduction in flowering plants are zygote. I have not written. So that is in place of seeds you write zygote. That is zygote. Seeds may be confusing, maybe zygotes. Which are 2, another question, which are the 2 important units of sexual units of sex
of a flower, which are two important sexual units of a flower. Two sexual units, calyx and corolla. Corolla and androecium. Corolla and gynoecium. Androecium and gynoecium. Which one is the correct answer? Which are the two important sexual reproductive units of a flower? Calyx and corolla. The calyx and corolla in a flower, you know, flower has 4 holes on a thalamus. 4 holes are in the ascending order, calyx, corolla, androecium, gynoecium are there, and this androecium and gynoecium respectively bear the male and female reproductive units. Calyx and corolla are accessory holes. It is called as, those are known as the essential holes. So androecium, gynoecium are the correct is the correct answer. They are the important sexual reproductive units of a flower. The innermost wall layer of a microsporangium is microsporangium. In your syllabus, in the syllabus of this sexual reproduction in flowers, there are 6 parts. I have taken down. There are 6 parts in this book. One is flower, a fascinating organ. Second is pre-pollination, structure and events. The pistil, megasporangium and embryo sac, pollination, seed, apomixis, polyembryony. In this way, एमती चारोटी यूनिट अच्छी चारोटी पार्ट अच्छी flower a fascinating organ. That is, what is flower? Flower is a modified shoot. That is a part of a shoot system. You know, from a when seed germinates from the plumule, the shoot system comes up and shoot produces pears, nodes, internodes, leaves, flowers, fruits, etc. And root system develops, terminates with root cap, and there are 3-4 zones like zone of cell division, zone of elongation, zone of maturation. Root ro emti chatta zone thae, zone of maturation root air bahar thae, and that those root hairs are the observing organs of water for the plants. So that is root hochi the plant ko stability and new nourishment provide karibo. Shoot system, all other functions like reproduction, photosynthesis, all activities will be. So flower is a modified shoot of determinate growth. Indeterminate no, it is not an internode. It is a shortened. Internodes are very short in a flower. So flowers are parts of shoot system of determinate growth, which bears certain holes like calyx, corolla, androecium, gynoecium. Chatta hole mainly kete jagare calyx, corolla modify jayte, kete jagare unisexual flower thae, mainly bisexual flower हम discuss करूँ. So the various ways what a flower को देखले. So first part of the flower a fascinating organ. Second part of the pre-pollination structure and events. Pre-pollination means the whatever development that takes place in the stamen, that is in the microsporiogenesis, etc. Pistil, megasporangium, embryo sac, pollination, seed, apomixis, and polyembryony. In the 6टा part अछि से बहिरे जो कोर्स रे अछि हमर जो ओडिया सिलेबस रे सेटा टिके बेसी डिस्क्राइब होई छै. एटा भारी सिंथेटिक 10 पेज माने नियरली 10-12 पेज भीतर सरी जाई छै. 20 पेज केबे नुहे 12-14 पेज भीतर सरी छी छुटिया पार्टटा. सो आदरु क्वेश्चन हमर पिला को डिस्क्राइब करा जाय. गोटे क्वेश्चन मु देइछि सेति में इनर मोस्ट wall layer of microsporangium is the site where microsporogenesis occurs.
गोटे stamen no gote what is stamen and androecium ro individual members are known as the stamens. Androecium is the male reproductive unit, organ. Male reproductive unit organ no individual unit की कहती stamen. Stamen no दीटा part अछि filament and anther. Anther रे जो ये अछि चारिटा लोब जेतेबेले माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हबो सेतेबेले चारटा लोब हबो and they are the microsporangium will develop. Microsporangium formation habo. So the innermost layer of microsporangium gote ke जेतेबेले माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होचे एते डिस्क्रिप्शन नाही हम CHSE रे अछि जे डिस्क्रिप्शन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस रे केमिति हुए microsporogenesis starts from a fertile cell that is called Archisporial cell. Archisporial cell. Right, that is called archisporial cell. Archisporial cell divides periclinally. Inner layer is known as the Sporogenous tissue. Microspore initial part and initials. Microspore initial wall initial divide करी पांचटा layer हबो epidermis ता तळगु रहबो endothecium ता तळगु रहबो two layers of middle layers. Innermost layer is known as the tapetum. तार दीटा layer पिला मानको आपण माने कहइबे दीटा layer significance अछि epidermis is the protective organ, no doubt. Epidermis सब जगह protection किंतु ता तळगु जोटा endothecium अछि endothecium helps in the dissemination of the pollination. से pollen गुडा को disperse करिया पई that helps. That is fibrous. The walls of endothelial walls are fibrous. So fiber liquid absorb करिवो से ताको खोली जीवो spores will be liberated. So for the liberation of spores, endothecium is a single layered structure that helps in the dissemination of the spores, microspores, and tapetum. Tapetum is the innermost layer. Tapetum is that is the nourishing layer. Tapetum is the nourishing layer. So ei dita layer pilangu टिके कहबे significant सेतिबे मु गोटे क्वेश्चन पचारि दिति. The innermost wall layer of microsporangium is endothecium, tapetum, epidermis, endodermis. So like this I have said question. So answer will be tapetum. Which one is responsible for nutrition of developing pollens? Which one is responsible for nutrition of the developing pollens? Tapetum, endodermis, epidermis, columella. Like this, 4 choices are given. So that is no doubt tapetum. Tapetum. Which one is the last cell of the male sporophytic generation? Male sporophytic generation. Choice दे देले जे मैंने जानी है जो मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर. Which one is correct answer? A हैला मेगास्पोर मदर सेल, B हैला मेगास्पोर, C हैला माइक्रोस्पोर मदर सेल, D हैला माइक्रोस्पोर. Which one is the last cell of the male sporophytic generation? Last cell of the male sporophytic generation. Which one? Microspore mother cell. Yes, microspore. C is the microspore mother cell is the answer. Because mother cell is the last cell always. Last cell is mother cell. First cell is the spore. Microspore or megaspore. Always first cell of the gametophytic generation is the microspore or megaspore. Spore is the first cell of the gametophytic generation. Mother cell is the last cell of the sporophytic generation. So zygote is the first cell of the sporophytic generation. Always zygote is the first cell of the sporophytic generation. Which is not applicable for sporopollenin. Sporopollenin. Sporopollenin code hai. Sporopollenin that is present in the Exine layer. Present in the Exine layer. Microspore wall, spore wall, pollen wall.
pollen wall, inner layer, the endothecium, that is called inner inner layer. There are two layered wall. A pollen has two layered wall, and in the outer wall there is deposition of sporopollenin. So which is not applicable for sporopollenin? Dominant component of the pollen wall can be degraded by enzymes, cannot be degraded by enzymes. Helps in the pollen grains for to be preserved as fossils. Sporopollenin एते गुड़ा काम करे जो माने microspore wall जो pollen wall, microspore means pollen can be technically called as the microspore because pollen is the haploid male gamete. From that male gamete is produced, that is the haploid pollen. Pollen is otherwise called as the microspore, technically called as the microspore, and microspore wall dita layer achi, inner wall and outer wall. Outer wall is made up of sporopollenin. Major component is sporopollenin. That is not extensible, but there are gaps. That is called the germ pores. That is called the pores through which pollen tubes come out. So dominant component of the pollen wall, yes, sporopollenin is the dominant component of the pollen wall. Can be degraded by enzymes? No, it cannot be degraded by enzymes. Cannot be degraded by enzymes, that is correct. And also because of that, pollen is being preserved because it is not easily decomposed by enzymatic action. So that's why it is preserved for a longer, can be preserved for a longer duration. So fossil जो pollen मिले से fossil pollen ने तार wall ले sporopollen थिबारु outer wall ले exine. Outer wall is called as the exine, inner wall is called as the intine, and that exine major component of the pura nuhe. Major component is sporopollenin, which cannot be degraded by enzymes, and that's why it can be preserved for a long duration. So eta ye bohi re bhi achi NCERT bohi re bhi lekha aichi tenu eta mu jama e bohi ru ama bohi ru mane council bohi ru kichi question set kari nai pray kari nai ayadare 7 number question, which one is different from other three? एमिति अभी क्वेश्चन MCQ पढ़ो, which one is different from other three? Microspore, pollen grain, spawn, anther. Microspore mark करंतु. Which one is different from other three? Microspore, pollen grain, spawn, anther. Anther. Spawn ना. Anther. एमते गोटे क्वेश्चन एथरो मैट्रिकुलेशन पढ़ीला Anther. से सार माने कंडक्टिंग बोर्ड को आसिले मते चैलेंज कले आमे कहे जो व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री कौन से एस्पेक्ट रे स्पर्म यू कैन से स्पर्म इज फॉर एनिमल्स सो एटा प्लांट केस रे सब गुडा प्लांट रो एनिमल नो एले स्पर्म इज हैप्लॉइड पोलन इज हैप्लॉइड हाउ कैन इट बी डिफरेंट गोटा केस रे त आमे हां से होची ये तीनटा कहूची प्लांट रो से गोटा कहूची एनिमल से गोटे एस्पेक्ट रे इट इज डिफरेंट बट आमे आउ जण कहबो नाही ये त अपलोड से त अपलोड केम देबो सम एमदे गोटे क्वेश्चन माने सिमिलर मु ए क्वेश्चन टा नुहे अन्य गोटे एमदे पढितला मते से माने तांको कंडक्टिंग बोर्ड रे मते पचारले मु कहली नाही जोटा ठीक आंसर मु कहली एटा दैट इज द ठीक माने करेक्ट आंसर कहले नाही सर एटा ये छि आपण ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स कहितले इतना मु कहली सब कथा कुआ जाय ना एमसीक्यू सब लागो ठीक बढिया किंतु ये गोटी एस्पेक्ट देखिए लोअर प्लांट रे हमें स्पर्म भी कहू लोअर प्लांट रे हमें सीना एंजियोस्पर्म रे कहूने लोअर प्लांट रे स्पर्म कहू तेणु एनिमल रे कहू स्पर्म हाँ अपलोड बट लोअर प्लांट रे भी स्पर्म कहा जाए इवन जिम्नोस्पर्म केस रे भी स्पर्म कहा जाए तेणु ये रे देखिवा जदि आंथर व्हाट इज आंथर
Anther is diploid. Anther is diploid, but microspore is haploid. ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବେ, କୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ତିନିଟା ହଉଛି ହାପ୍ଲଏଡ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିପ୍ଲଏଡ ଆନ୍ଥର ହଉଛି ଡିପ୍ଲଏଡ ଆନ୍ଥର ସେଲ୍ ଇଜ ଡିପ୍ଲଏଡ so anther is the answer which one is different from other three which is not the characteristic of vegetative cell of pollen grains which is not a characteristic of vegetative which is not the characteristic of vegetative cell of the pollen grain. Pollen grain na dita cell ach. Pollen grain na dita cell ach. Two cell stage pollen grain tube cell generative cell. Dita cell ach tube cell generative cell. So which one is not the characteristic of vegetative cell of pollen grain? Carriage male gametes. B. Abundant reserve food. Large irregular shaped nucleus. It is bigger. Which one is not the characteristic of vegetative cell of pollen grain? Carries male gametes, abundant in reserve food, large irregular shaped nucleus, and it is bigger. So our answer of abundant reserve food, other food vishes not hai, reserve food material not hai. That's why it grows and carries the male gametes along with it. It carries the male gametes. Dita male gamete to carry kala here angiosperm flowering plant re large irregular shaped nucleus achi. It is big structure. It grows from the stigma to the egg apparatus and embryo sac. The part so a part ta gala micro jo second part is pre-pollination structure and events. Structure and events. Pre-pollination structure होउची या जे गोटे flower रो जो androecium रो individual members of androecium are known as the stamens. Stamens has two parts: filament. Filament is the stalk of the stamen, and anther. On the anther there are the microsporangia. Charita microsporangia charta year develop करे microsporangium रो microsporogenesis, microspore development हुए, archisporial cell divides periclinally, outer and inner wall initial and the microspore initial, wall initial divides, redivides from the wall layers, outer epidermis, endothecium, middle layers, endothecium, inner divides, redivides, at last forms the microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes reduction division, produces microspore tetrad. Microspore tetrads are arranged in different fashions. That may be tetrahedral is typical type, maybe linear, maybe T-shaped, maybe inverted T-shaped. There are different types of arrangement of the microspore tetrads. Microspore tetrad each microspore tetrads contain one microspore nucleus, and that develops from that the pollens are being formed. The pollen structure, pollen pollination. So that is about the pre-pollination changes. Then we will come to the question from the megasporangium. Megasporangium re lekha hai chapter achi the pistil, megasporangium and embryos of pistil. Pistil is otherwise called as the gynoecium. Gynoecium, individual members of the gynoecium are known as the carpels. Carpels have three parts. Carpels have three parts: ovary, style, stigma. Ovary, style, stigma. Ovary ra ovary vitre
ओव्यूल थाए ओव्यूल जो अटैचमेंट करी थाए ताको कहंती प्लासेंटेशन attachment of the ovule to the ovary wall is known as the placentation. Placentation विभिन्न टाइप रो अछि सेउडा सब CHSE बहि रो अछि लाइक मार्जिनल फ्री सेंट्रल सेंट्रल पेरिएटल एक्जाइल एम केते रकम रो अछि फॉर एग्जांपल आपण माने मोटर सीट को खोली दिबे ओडा पिला को प्लासेंटेशन देखैबे केमति पेसे प्लासेंटेशन देखे मोटर मंजीटा को छडेइले मंजीटा जेमति लागि छी से कोडी लागि छी से मार्जिन की धार को लागि छी. So that type of placentation is known as the marginal. That is the marginal placentation. Margin की लगी थी सेतवे marginal था ना. Same थी parietal. Peripheral लगी थी parietal. Central center लगी थी ले central. Center रे free एक थी ले free central. Axis रे लगी थी ले axial. ये इनका कितना कमरो placentation होती. Placentation means attachment of the ovule to the ovary wall. To the ovary wall. The prathama question hoji the part of the carpel that receives pollen grains. Pollen grain ha mu कहउतले carpel तीनटा part अछि ovary style stalk of the carpel is known as the style. तार stalk टाउ कहंती नाडा टाउ कहंती carpel जो style and stigma is the receptive part top portion ये त तीनटा part रहिला this is the stigma. It has a style. It has a ovary. Ovary with ovules होता है. Like this. So style इधर से question होती है the part of the carpel that receives pollen grains is called ovary, ovule, stigma, style. Now, कौन कहती ovary कहती ovule कहती stigma and style. So it is stigma. Which are called ovules? काको हमें ovule कहवा? Microsporangia, megasporangia, ovary, anther. Which one are called ovules? Ovule ko otherwise megasporangia. Microsporangia is the male part and ovule is the megasporangia. Megasporangium is otherwise known as the ovules. So which are called ovules? इटी मु भावुची ओवरी टा देले हबनी आ गोटा कोन देखिबे एमते क्वेश्चन करिवे जतले पिला को आपण दउचंती ओवरी देले व्हिच आर कॉल्ड ओव्यूल्स ओवरी कहले हबनी आ गोटा कोन देबे एमतिका लाइक न्यूसेलस बेटर टू गिव न्यूसेलस ओव्यूल स्ट्रक्चर केमतिका एटा टिके जानिया कथा ओव्यूल एंजियोस्पर्म केस रे विभिन्न टाइप रो ओव्यूल अछि लाइक ऑर्थोट्रोपस अनाट्रोपस कैम्पाइलोस्ट्रोपस सर्सिनोट्रोपस हेमी अनाट्रोपस एमती केते रकम रो अछि टिपिकल ओव्यूल हमें जो ओव्यूल पहला माने एंजियोस्पर्म केस रे देखुचंती दैट इज ऑलवेज अनाट्रोपस ओव्यूल ओटा ओव्यूल होची एमती स्ट्रक्चर तार दीटा इंटेगुमेंट थाए ओव्यूल ला स्टॉक दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल जोटा अटैच करूची ओव्यूल ओवरी वॉल को अटैच करती जोटी स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज द फ्यूनिकल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज द हाइलम एटा कहते फ्यूनिकुलस और funiculus. The opening, these are known as the integuments. There are two integuments. So these are integuments. Two integuments are there. And this opening is known as the somewhere cover. जो जगह opening तक कौन थी
Micropyle. Micropyle. Main body of the ovule. This is the main body of the ovule. Ako kon kaiba? Nucellus. This is micropyle. The other end is known as the calaza. What a ovule structure is this? What a typical item. This is anatropous, inverted ovule. Orthotropous ovule is this. See the ovule straight. This is straight. This is inverted ovule. So ovule structure is like this. Ovule structure mone rakhantu ei guda part guda the stalk of the ovule is known as the funiculus. Stalk of the ovule is known as the funiculus. Point of attachment is known as the hilum. Point of attachment is known as the hilum. Ovule has two integuments. It is it envelops the nucellus all through, but at one end it is there is a narrow opening that is called micropyle. The other part of the micropyle is known as the calaza, and main body of the ovule is known as the nucellus. And inside this ovule there is the embryo sac, and there are it is a 7-celled 8-nucleate structure. These are known as the antipodals. Embryo sac. This is known as the embryo sac. This is antipodal. This is central cell. Central cell. This is known as the egg apparatus. These are the two synergids. This is the egg cell. This structure ta janile structure ta jodi pila mane rakhi paribo tale double fertilizer triple fusion describe kariare bhari sahaj habo kichi asubidha nai. So this structure boy re jadio detail mu jani nei achi kemti aji man nai moro but one should remember the structure of the ovule. Ovule structure is like this. Like this is a typical anatropous ovule. Auri bibhinna rakamar ovule hochi, banka ovule hochi, eta sidha ovule, eta ollata ovule, auri horseshoe shaped ovule, bibhinna rakamar ovule hochi. Ovule is otherwise known as the megasporangium. Ovule is known as the megasporangium. Which of the following possess one-seeded ovules? One-seeded ovules. Karo gottae manji deko pala ovule hochi. Sera boy re mane CBSE NCERT boy re hochi. Wheat rice mango, wheat rice papaya, wheat mango orchids, rice mango watermelon. A vitru kara gotiye laga manji hochi. Ko group ro eta mu jo koithile chari type ro gote type ro question. Which of the following possess one-seeded ovule? Kara gotiye lega ovule hochi. Gote bi hochi wheat rice mango. Wheat rice mango. Mu bhabuchi eta thik. Wheat rice papaya. Papaya mane papaya to phala bhitere bahut manji thae. Wheat mango orchids. Wheat mango gotiye orchid re besi thae. Rice mango watermelon. Watermelon ne bahut rahila. Teno wheat rice mango hochi one-seeded ovules. The gotiye manji gotiye iye. One-seeded ovules. Which is the correct sequence? Mu koithili char rakam ye gota correct. Which is a correct sequence? Tike mark karando. Thalamus. Thalamus. What is thalamus? What is thalamus? Thalamus is the structure over which all the flattened structure, flattened or hemispherical structure over which all the floral parts are born, floral structures are born. Thalamus, ovary, stigma and style. Thalamus, ovary, stigma and style. Thalamus, ovary,
style, stigma, stigma, ovary, thalamus, and style, style, ovary, thalamus, and stigma. ये चार्टा दिया है खाली सफल करा है कोटा ठीक ऑर्डर thalamus, thalamus is the platform, the structure over which floral holes are born. तारे गोटा thalamus ऊपर है, thalamus गोटा इनके structure है तो hemispherical, इनके गोटा raised structure है तो आरी ऊपर है, गोटा carpel is born, carpel is born तार go but अच्छी ovary style stigma, ovary style stigma होती ठीक ऑर्डर, ascending order, ovary style stigma अपन इधर मिसी मासी कहबा होबनी तेनु जे करेक्ट सीक्वेंस देखेबे वो करेक्ट सीक्वेंस थैलेमस ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ए होची करेक्ट सीक्वेंस एमते सीक्वेंशियल क्वेश्चन पड़े मल्टीपल चॉइस टिके पिला को भाबिबा को पड़िबो व्हिच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म व्हिच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म चॉइस हला न्यूसेलस ovary, ovule, the key on the nucellus, ovary, ovule, embryo sac, the third nucellus is. Acha, embryo sac. Good answer about बाबू अविनाश बाबू पड़े पढ़ेले Which one is the female gametophyte of angiosperms? Nucellus, ovary, ovule, embryo sac. So ovule. Embryo sac. Embryo sac is the female gametophyte. Female gametophyte means haploid. अभी तो nucellus haploid नुए, ovary haploid नुए, ovule haploid नुए, cells of ovule भीतर अच्छी embryo sac, but all the cells are not haploid. So embryo sac inside that ovule, or you can say nucellus, and तादरे गोटे embryo sac develop करती, that is the female gametophyte. Synergids are part of antipodals. Synergids are part of antipodals. कार part कहिए? Part of antipodals, central cell, egg apparatus, polar nuclei. Egg apparatus. Synergids are part of antipodals, central cell, egg apparatus, polar nuclei. Egg apparatus. Yes, ये चित्र तो दिया है चित्र जानिए ये तो part of egg apparatus. एम दिया क्वेश्चन माने पिलाटा को ओटा खाली तारो ये टा कहते से मन रखी जी ताको टेस्ट करिया कथा filiform apparatus. Filiform apparatus are special thickenings of. Filiform apparatus are special thickenings of antipodal cells. Synergids. Synergids. Polar nuclei. Egg cell. Synergids. Filiform apparatus Synergids. are special thickenings of antipodal cells. Synergids. Polar nuclei. Egg cell. Synergids. Synergids. Synergids, right. Synergids. से डायरेक्ट करे फिलिफॉर्म apparatus फिलिफॉर्म से नारु जणा पड़ची से जदी सिनर्जिड सेल टाको हमें टिके देखिबा भलो करी मैग्निफाइड व्यू देखिबा तादे एंती लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर दिबो फिलिफॉर्म apparatus ता कोन दे फिलिफॉर्म apparatus फिली मींस जो लीफ लाइक पत्र भलिया apparatus सो सेमते बाहर दिबो से apparatus that apparatus directs the direction of pollen tubes. Directs filiform apparatus directs the direction of polar tubes towards the egg cell. Egg cell आड़ को से direct करूँगी ये
जो pollen tube टाको direct करती, so it carries the male gametes. So male gamete आसियो बोली तार filiform apparatus काम होउची, that is present in the synergids. So that may be called ताले एक apparatus रे काहे की रोइची synergid, what is the function? तो गोटे दिटा sentence या question पढ़े, for example question ऐसला synergids. पिला कौन लिखो दिटा sentence, 2 sentence. Synergids are गोटे point ला synergids are part of a apparatus. 1, 2 ela. It directs. You can write the it is an haploid cell. Third point above, it contains filiform apparatus which directs the direction of pollen tubes toward the egg cell. Question number 16. A typical embryo sac in angiosperm are 8 nucleate and 8 nucleate. 8टा nucleus अछि. कौन होउची? हाँ, megasporogenesis मु कहलिन. In megasporogenesis, microsporogenesis रे microsporogenesis means microspore. तारा word meaning is sporogenesis. Genesis means formation. That is microspore formation. Microspore formation, microsporogenesis. Microspore formation. ये आरंभ होउची आर्किस्पोरियल सेल लो. आर्किस्पोरियल सेल कैरेक्टरिस्टिक होउची गोटे सेंटेंस आर्किस्पोरियल सेल मने करंतु पिलार पढिला गोटा क्वेश्चन आर्किस्पोरियल सेल. व्हाट इज आर्किस्पोरियल सेल? Archisporial cell is the cell from which microsporogenesis starts. 1 point. आउ गोटे भारी ये पॉइंट एनी बही एनी बुक एम्ब्रियोलॉजी बही देखिए लिखा है दिबो आर्किस्पोरियल सेल is differentiated from the rest by its larger size, radial elongation, more prominent nucleus. आउ सबु सेल भितर ता ना आर्किस्पोरियल काई दियाला. आर्किस्पोरियल means spore रो आर्क माने पूर्व structure. So that's why archisporial. Larger size, radial elongation, and more prominent. सबु बेले मु माहेश्वरी बहिरु पढिछि जोटा होछि मास्टर बुक से बहिरु एनी माने हायर सेकेंडरी बहि देखंतु लेखा आइदिबो archisporial cell is differentiated from the rest by its larger size, radial elongation, more prominent nucleus. More prominent nucleus. So microsporogenesis to start hela तारे तीनटा स्ट्रक्चर को मन रखिया पड़ियो आपण मानको endothecium, tapetum, and microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes reduction division to form the microspore tetrad. Microspore tetrad. Megasporogenesis is sendi. Megaspore केमती formation होउची. And microspore tetrad मु कहिची जो माने botany PG थिबे आपण मानको भितर जो माने थिबे माने देखते माइक्रोस्पोर टेट्राड 5 रकम अरेंजमेंट अछि. टिपिकल होची टेट्राहेड्रल तापर होची लिनियर लाइन ने थिबो चारटा जाक स्पोर लाइन ने रहइबो चारटा जाक स्पोर लाइन ने रहइबो लिनियर टी सब टी भଳି आइथिबो एमटी आइग्री टी भଳି आइथिबो इटी दिटा सेल थिबो आइटी दिटा रहला and the T shaped inverted T shaped eta inverted T shaped hela सीधा रहइबो ऊपरटा चौड़ा होई जिवो. isobilateral एमते सब 4-5 रकम अछि 4-5 रकम अछि. compound pollen grains are known as compound pollen grain को कोन कहंती
compound pollen grains are known as pollinia. Pollinia. जोटा वाल नाही सपोजिंग आदरा वाल नाही से चारटा न्यूक्लियस एकाठी अछंदी कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर नोन एज द पॉलिनिया एंड पॉलिनिया आर सीन इन केस ऑफ को केस रे टिपिकल केस होची कालोट्रोपिस अरख गछ रे होची कंपाउंड पोलन ग्रेन्स सो एटा टिके मन रखते बोय रे नाही बट एज टीचर्स वन हैज टू रिमेंबर दिस थिंग व्हाट आर कंपाउंड पोलन ग्रेन्स एंट्रांस पिलांगर पढे कंपाउंड पोलन ग्रेन्स what is known as the compound pollen grains. So ये होची माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस सेमती मेगास्पोर रो सेल जो सेल इनिशिएट होची से सेल को कहंती आर्किस्पोरियल सेल सेम थिंग आर्किस्पोरियल सेल किंतु आर दी रकम रो अछि तार डेवलपमेंट डिफरेंट ओटा कहते ये बॉय नहीं क्रासिन यूसेलेट टेन्यून यूसेलेट पेरिफेरल पोर्शन रे टेन्यून यूसेलेट क्रासिन भीतर को जदि आर्किस्पोरियल रहला ता कहते क्रासिन यूसेलेट एमदी दीटा टाइप रो थाए क्रासिन यूसेलेट टाइप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल टेन्यून यूसेलेट टाइप ये जो भी मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हुए मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो जो भी मेगास्पोरोजेनेसिस जो स्टार्ट होई सेटा होची ए तारे एते डेवलपमेंट पिला को कहबा दरकार नै हायर स्टेज रे से माने जानिबे ताको कोंदे आर्किस्पोरियल सेल मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन सो हाउ मेगास्पोर इज बीइंग फॉर्म्ड सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन दी टाइप रो आर्किस्पोरियल सेल प्रथम डिवीजन हबो पेरिक्लिनल डिवीजन हबो आउटर वॉल लेयर फॉर्मेशन हबो इनरटा डिवाइड्स रीडिवाइड्स एते तार डिवीजन नै खाली कहक पड़े पिला को डिवाइड्स रीडिवाइड्स फ्रॉम द मेगास्पोर टेट्राड एंड मेगास्पोर टेट्राड एते रकम अरेंजमेंट नै लीनियर टेट्राड मेगास्पोर फॉर्मेशन होय लीनियर टेट्राड आ भितरु ए तीनटा भितरु ए चारटा भितरु गोटा तीनटा डिसऑर्गेनाइज कर जाए तीनटा डिसऑर्गेनाइज कर दिबो गोटी मात्र रहिबो दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो साक केमिति हुए एटा न्यूसेलस भितर होची ओव्यूल भितर न्यूसेलस अछि न्यूसेलस भितर मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज द न्यूसेलस मु कहि तारे न्यूसेलस भितर होई सब डेवलपमेंट सेठी क्रासिन न्यूसेलेट टेनिन न्यूसेलेट जो दी टाइप रो अछि जो एम्ब्रियो साक डेवलपमेंट सेमते हुए आ तादर लोअर मोस्ट फंक्शनल लोअर मोस्ट रहिला लोअर मोस्ट होची दैट इज द फंक्शनिंग न्यूक्लियस काहेकि ना मेगास्पोर रे सीड फ्रूट डेवलपमेंट होची तेणु सब जगह फंक्शनल नଥାଏ गोटाए थाए दैट इज अडाप्टेशन केमती हेची कोन हेची एवडा हमर परव्यू रे डिस्कशन नाही किंतु गोटे मेनली किंतु अछि मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो साक 16 टाइप रो अछि माहेश्वरी वही अछि 16 टाइप रो एम्ब्रियो साक डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक दी रकम रो बाइस्पोरिक दी रकम रो टेट्रास्पोरिक 4 गला आ 10 रकम होची 12 रकम होची टेट्रास्पोरिक 12टा टाइप रो कोन फ्रुटिलेरिया टाइप डुसा टाइप आडोक्सा टाइप केते टाइप अछि तेणु ये मात्र मोनोस्पोरिक दी रकम माने माहेश्वरी बहिर अछि किंतु आमे तो पिला को एते कथा कहबानी एटा होचे मोनोस्पोरिक गोटिए मात्र फंक्शन करियो मेगास्पोर भितरु गोटिए फंक्शन करियो मेगास्पोर मींस दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन फर्स्ट सेल and that nucleus are खाली nucleus divide करिवो nucleus divides to dita nucleus divide करिवो आ जे nucleus division परे ता मझरे vacuole develop होबो vacuole develop हेले गोटे एपोल को चल दिबो आ गोटे एपोल को चली आसबो केमिति एम्ब्रियो साक कहू जे हमें कहू से दैट इज मेगास्पोरांगियम एम्ब्रियो साक इज द मेगास्पोरांगियम सो ये दुईटा पोल को पळेले सेल न्यूक्लियर डिवीजन होबो सेल प्लेट फॉर्मेशन होबो तापर ये एकरु ये पुणी आउट डिवाइड करिवो दुई हला ये आउट डिवाइड करो ओनली टू टाइम्स डिवाइड करले चारटा हे गला चारटा रु आरो गोटी लगा चले एसो सेंटर को तेणु से दो नोन तो पोलर न्यूक्लियर और सेंट्रल सेल केतर को ना था डेफिनेट न्यूक्लियर और केतर को ना कहंती
Utero fusion product is known as the endosperm. Fusion product is known as the primary endosperm. So ये एमती तापर ये तीनटार माइक्रोबाइलर तीनटार होबो कोन ना एक apparatus होबो कैलादर तीनटार होबो antipodax होबो आ मझिर रहबो सेंट्रल सेल एमती आबो तेणु एटा होची मेगास्पोर फॉर्मेशन रे typical embryo sac question होची typical embryo sac in angiosperm are 8 nucleate and 8 celled 7 celled 6 celled 4 celled structure कितना सेल हला आठटा न्यूक्लियस कितना सेल 7 cell. 7 cell structure. So 8 nucleate and 7 cell structure. Which are the flowers to show? Oh ये सॉरी गला ये रू आउ विशेष ये बहिरे विशेष किसी लेखा नहीं ये आमो ये बहिरे अच्छी काउंसिल बहिरे अच्छी किंतु ये एनसीईआरटी बहिरे नहीं ये तो कथा ये typical embryo sac is 8 nucleate and 7 cell structure. Which are the flowers to show typical orthogamy? Orthogamy pollination asla. What a part asla pollination. What is the meaning of pollination? Pollination means transference of pollen grains. Transference of pollen grains is dita word nishchito likhiya padibo from the anther of a flower to the stigma of the same flower or a different flower of the same species. No, that is the meaning of pollination. Pollination definition of this here. Pollination is the process of transference of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower or different flower, whatever it may be. That but it is a transference of pollen grains. So which pollination there are three pollination basis रे pollination दी रकम आगो कहउतले आगो गरे ये बहिरु उठी जाईची ये रे 9th 10th बहिरे अभी आउ नाही होची pollination होची तीन टाइप रो एबे आउ कहउनांते आम बेले हमें पढुतलु pollination हो दी टाइप रो ओटा होची सेल pollination आ गोटे होची क्रॉस pollination एबे सेल क्रॉस उठी गलानी सेल्फ क्रॉस pollination उठी गलानी एबे होची pollination होची तीन टाइप रो गोटे होची ऑटोगामी आ गोटे होची Genogamy. एक्टोनोगामी थर्ड टा होची झेनोगामी तीनटा टाइप रो pollination होची ओटा होची ऑटोगामी is the transference of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the same flower. Same flower. ले ऑटोगामी आमे जागो सेल pollination को क्रॉस जो गेटोनोगामी होची सेटा होची मोनोइशियस प्लांट रे मेनली मोनोइशियस प्लांट आपण जानते मोनोइशियस प्लांट दी रकम रो अछि मोनोइशियस डायोसिस जानछन तो कखारु गछटा कखारु गछ होची मोनोइशियस प्लांट जो फूल बिक्री होची दोज आर ऑल मेल फ्लावर्स जो फूल बिक्री होची फूल बिक्री होची दोज आर मेल फ्लावर्स because from those flowers there are no carpel, no ovary, so there won't be any fruit development. Fruit habo nahi. Teno se 2000 male flower. Jo phulor bese tole emtia gote swollen part achi. Greenish swollen part se hochi female flower. So same plant. Jodi same plant re break hobo ni break. Same plant रे if same plant at different portions, different positions bear unisexual flower, kichi flower male, kichi flower female, ताहले that is monoecious. बुझी पाले कि monoecious means on the same plant male plant. Male flowers and female flowers are born on the same plant.
So flowers are unisexual. Monoecious flowers are unisexual. But plants possess both male flowers and same plant. Se hoji typical example hoji kokharu, cholera, jani, ये सब होची typical monoecious plants. Dioecious को उड़ा वो. Dioecious plants are strictly male plant or female plants are separate. हाँ, ଆଉ ଗୋଟେ monoecious plant typical example ମନେ କରନ୍ତୁ ମକା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, banana. Those are all monoecious plants. ମକା ଗଛର ଉପରୁ ଯୋଉଟା ଥାଏ, ଉପର portion ମକା ତଳ portion ମକା ଫଳେ, ସେଟା ହଉଛି female flower ମକା ଫଳୁଛି. ଯୋଉ flower ଉପର portion କୁ ରହିଲା sterile portion, those are all male parts. ସେମିତି କଦଳୀର ଯୋଉଟା ଭଣ୍ଡା portion, ସେଟା that is male flower. ଆଉ ଯୋଉଟାର ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଗକୁ ରହିଲା ଭଣ୍ଡା ହେଇକି ଯୋଉଟା ବାହାରି ଗଲା, ଆଉ ଯୋଉଟାରୁ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା, those are all female parts, female flowers. So female flower ସେଗୁଡା ଡେଭଲପ କରୁଛି, male flower କିଛି ହଉନି, ସେ ଭଣ୍ଡା ହେଇକି ଶେଷକୁ ଯାଉଛି. So ଏଇ ହଉଛି typical male monoecious plant. Dioecious ହଉଛି typical example ହଉଛି ଖଜୁରୀ, date palm ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଖାଲି flower ହବ, କିଛି ଫଳ ହବନି. Those are typically the dioecious plants. Male plant and female plants are separate. Male and female plant alga ରହୁଛନ୍ତି. Those are all dioecious plants. Break for 5 minutes. 5 minutes break. 5 minutes break. Then there are nearly 40 questions more. 15टा ଆମେ discuss କଲେ ଆହୁରି 40ଟା ଅଛି. We'll discuss. Okay, thank you.
Start. Acha. Welcome back. Next question. Which are the flowers to show typical orthogamy? Which are the flowers which show typical orthogamy? Cleistogamos and Gaetonogamos, Cleistogamos and Chasmogamos, Cleistogamos and Genogamos, Chasmogamos and Genogamos. ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ ଗେଟୋନୋଗାମି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ଟାଇପ ହଉଛି ଗେଟୋନୋଗାମି ହଉଛି monoecious plant ରେ ଗେଟୋନୋଗାମି occurs and genogamy ହଉଛି ଗୋଟେ foreign plant, same plant ନାହିଁ, different plant, maybe of same species or may sometimes also different species. Geno means foreign. So ଗୋଟେ foreign plant ଗୋଟେ unknown plant ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ सेम प्लांट नुहे ताको कहवा जेनोगामी वर्तमान आमे ए तीनटा टाइप रो पॉलिनेशन कुआ होची आउ सेल क्रॉस को उठी जाई छी आउ पढ़ा होनी आ क्लासिकल पढ़ा माने कुआ होतला सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन आउ सेमिति नाही सर क्लिस्टोगेमस फ्लावर which are the flowers to show typical orthogamy? Cleistogamos and Gaetonogamos. Gaetonogamos हेले हबनी orthogamy same flower हबनी Cleistogamos flower. क्लिस्टोगेमस सर second house Cleistogamos and Chasmogamos. Chasmogamos flowers never open. So Cleistogamos, Genogamos, Chasmogamos ये बही रे अछि आपनकर बही रे ये बही रे अछि Chasmogamy and Cleistogamy. Which is not the characteristic of Cleistogamos flower. Cleistogamos flower कोटा characteristic नुहे. Do not open at all. Anthers and stigma on separate flowers. Anthers and stigma in close contact. Born in same flower. Do not open at all. Anther and stigma are Anther and second stigma sir. on separate. Anther and stigma indicate the characteristic of wind pollinated flowers. Wind pollination, anemophilous. Pollination mu कहली जो तीनिटा हुए ऑटो गेटेनो जेनोगामी same the केमिति pollination, what are the agents who carry out pollination? चारोटी एजेंट जणा जो बायोटिक अबायोटिक आमे एमती डिवाइड कर देई परिबा बायोटिक होची इंसेक्ट की ह्यूमन बीइंग एनिमल्स abiotic होची wind and water. So wind and water पे जो फ्लावर जो पोलन ने adaptation थाए पोलन की आंथर adaptation सब थाए indicate the characteristic of wind pollinated flowers. Large, colored, fragrant, have nectar. Small, colored, flowers with light pollen grains carried in water. Small flowers and light pollens and non-sticky pollen grains. Small flowers and light and non-sticky pollen grains produced in large numbers. Large colored nectary pollen grains, sticky. आ भितर कैरेक्टर होची तार स्मॉल फ्लावर्स फूल गुड़ा छोट फूल को भी कैरी करके नहीं जाई पारे विंड रे चली जाई पारे स्मॉल फ्लावर्स लाइट नॉन स्टिकी कोड अटकी जीवनी पवन उड़ी पळेबो नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर बहुत हबो बहुत संख्या रे हबो असंख्य हबो आ छोट फूल को कैरी कर नहीं जाई पारे ये थिले पोलन ग्रेन होची लाइट एंड नॉन स्टिकी लागिवनी इंसेक्ट देरे लागिवनी कि को ऑब्जेक्ट रे लागिवनी अटकी जीवनी
and large number produce हुए. Which one of a flower provide nutrition to the insects in the process of pollination? कोटा nutrition provide करूची ये to insect अच्छी गोटे type रे insectivore entomophilous flowers, anemophilous, entomophilous, zoophilous, hydrophilous. So entomophilous flower रे insect को food जोगोची, nourishment भी जोगोची flower कोटा nectar, color, scent, size. Color, nectar, scent, size. Which one? Nectar. Yes, nectar. Which one of a flower provide nutrition to the insect in the process of pollination? So nectar. Yella mane general pollination process. तापर गोटे पार्ट अछि पोल दीटा नुआ कथा माने आमे जाको आगो पढौतलु कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आजिकल ता करचंदी टिके बेटर ये करी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यदि खाली सेम जो सेल पॉलिनेशन ऑटोगामी कंटिन्यू करिवो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ताले कोन हबो तार हाइब्रिड विगर डेवलप करिवोनी with the changing circumstances environment the plant cannot adjust, it cannot produce better seeds, viable seeds. So there are a lot of handicaps jodi khali autogamy chalila generation after generation teno there are certain adaptations, special adaptations ame olden time रे आगे पढौतलु ताको contrivances केमिति contrive करूची for cross pollination. So to avoid self pollination, what are the contrivances of cross pollination? Like dicliny माने गोटे यूनिसेक्सुअलिटी ताको अदरवाइज कोइ परिया गोटे होजी मेल फ्लावर फीमेल जेमति गेटेनोगामस गोटा जगह रे मेल फ्लावर अछि आ गोटा जगह रे फीमेल फ्लावर होची डाइक्लिनी गोटे होची डाइकोगामी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टामेन आगो मैच्योर करथिवो प्रोटैंड्री आ गाइनोसियम परे मैच्योर करथिवो किबा गाइनोसियम आगो मैच्योर करतो प्रोटोगाइनी स्टामेन परे मैच्योर करतो सो डिफरेंट टाइम रे मैच्योर करले pollination होबो ठीक टाइम रे pollination दरकार सो दीज आर ऑल हाइब्रिडिंग लाइक हरकोगामी गोटा ये होबो माने गामी मीन्स मैरिज तो माने फ्यूजन सो से फ्यूजन पई गोटा कोन बैरियर थिवो हरकोगामी हेटेरोस्टाइली एमते सब चारि पांचटा कोन हमर सब आगे पढा होतला वर्तमान ताकू करछन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस चलो माने ऑटोगामी जदी कंटिन्यू करिया ता कहबा इनब्रीडिंग डिवाइस इनब्रीडिंग पे भी एडाप्टेशन अछि प्लांट रे आउटब्रीडिंग पे भी एडाप्टेशन अछि सेमते आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तादर भी क्वेश्चन आसी पारे व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस कोटा भितरु आउटब्रीडिंग डिवाइस नु है pollen release and stigma receptivity not synchronized फुलटा हेतिबो bisexual but pollen release करिवो and stigma receptivity not synchronized stigma कयो मु रिसीव करिवेनी सेटा से स्टिकी नथिबो से एंटांगल करि पारु नथिबो जे एटा को pollen टाको सो सेटा which is सेटा गोटे आउटब्रीडिंग डिवाइस anther and stigma placed at different position ओटा तळे अछि ओटा ऊपर रहउछि supposing anther टा रहला तळ लेवल ले stigma टा रहला ऊपर लेवल ले तेणु ए जाई परिबोनी so that is another adaptation आ भितर कोउटा नुहे मु भाबुछि प्रथम दिटा नुहे थर्ड टा होछि bisexual flowers reproductive organs mature simultaneously ताले एटा ही होछि बोधे it is not an outbreeding device flowers are unisexual so third ta hoji answer mane question hoji ya which is not an example of outbreeding device a bitiru kouta outbreeding device nuhe
pollen release and stigma receptivity. Pollen release out stigma receive kari paibar shakti rakhithibo. Not synchronized. Gote time re houni simultaneously hei paruni. Anther and stigma placed at different heights. Different height rohuchi. Bisexual, full bisexual. Reproductive organs mature gote time re mature koruchandi. So it is not a outbreeding, it is a inbreeding device. Flowers are unisexual. Unisexual heଲେ तो gatonogamy होगा. So 22. Gatonogamy occurs in. कोउतरे gatonogamy होउची. चारटा example दिया है. For example, maize, oxalis, viola, camelina. ये सब यही बही रे अच्छी बही रू मु देइची. तेणु मे भी क्वेश्चन मे भी कमिंग मु आपन कहिची जे गेटोनोगामी को केस रे हुए मोनोइसियस प्लांट रे हुए मेनली मोनोइसियस प्लांट्स और गेटोनोगामी को के डायोसिस हेतिबो ए बाइसेक्सुअल हेतिबो किंतु गोटे टाइम रे मैच्योर कर नथिबो कोन जो आउटब्रीडिंग डिवाइस जति थिबो ताले से आगोटा को जीवो किंतु से आमे स्ट्रिक्टली कहि परे गेटोनोगामी occurs in monoecious केस के कखारु जो कोन जर्नी कलरा ये सब क्यूकरबिटासी फैमिली ऑल थ्रू से कारण तार डिफरेंट गोटा होची मेल फ्लावर गोटा होची फीमेल फ्लावर सो गेटोनोगामी occurs in maize oxalis viola camelina ये तीनटा को camelina viola ये होची तीनटा को होची bisexual flowers maize होची unisexual flower maize केस रे होची flowers are unisexual so गेटोनोगामी occurs in maize मु कहितली maize रो ऊपर होची male flower तब होची when in a bisexual flower pollen mature fast ovary matures later it is called protogyny protandry unisexuality heteromorphism Protandry. Protandry B protandry right when in a bisexual flower that is an outbreeding device when in a bisexual flower pollen matures fast ovary matures later it is called not protogyny jodi gynoecium mature fast korto protogyny proto means fast protandry unisexuality flowers may be bisexual likha hai ji bisexual flower question hochi heteromorphism मॉर्फिज्म में दीटा फॉर्म रहउंती हेटेरोमॉर्फ नो तेनु ए जो आंसर होची प्रोटैंड्री 24 which one does divide to form male gametes in angiosperm कोटा डिवाइड कले मेल गैमेट होची ट्यूब सेल स्टॉक सेल जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल generative cell right generative cell कारण जेतले पोलन ट्यूब टा फॉर्मुलाइट कैरीज द generative nucleus से न्यूक्लियस चली गला से लास्ट डिवाइड करियो टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स ट्यूब सेल तो ट्यूब करियो which one of embryo sac does contain filiform apparatus एटा बोते जाई चिना हो which one does of the embryo sac does contain filiform apparatus egg cell antipodal cell definite nuclei synergids jaichi which one cannot be included under pollen pistil interaction कोटा का में कोई बने pollen pistil interaction which one cannot be included under pollen pistil interaction pollen recognition pollen tube growth pollen maturation pollen initiation
pollen maturation. Pollen recognize kariwata hochi pollen pistil interaction. Se Pollen recognize maturation. nagar receive karibani, receive kale grow karibani. So that is one pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction na hei pa hele pollen tube grow karibo. Pollen maturation na kichi it depend koruni. से pollen tube growth कला तापर pollen mature कला pollen maturation pollen mature करूची ये होची सेटा that is independent of pollen pistil interaction. The fourth point है ला pollen inhibit जद कर दला it is clear case of pollen pistil interaction. Clear case recognition होची clear case pollen tube growth होची clear case of pollen pistil interaction. जदी interaction नहब ग्रो केमती करिवो ताको पेनिट्रेट करिवो से ताको फंपाटा नाही ता सेल को पेनिट्रेट करिवो. सो देयर इज सम इंटरेस्ट इट शुड बी देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी नथिले हबनी. सो दैट इज दीस थ्री आर क्लियर केस. पोलन मैच्योरेशन पोलन तार मैच्योर करछि दैट मे बी प्री पॉलिनेशन स्टेज रे मैच्योर करि पारे पढी साला परे मैच्योर करो सेटा पोलन निजस्व कर्तव्य निजस्व कार्य. It is not dependent on the two pollen pistil. The process of removal of anthers from the flower bud before anther dehisces in order to initiate hybridization is called genogamy under the process of removal of anthers. Anther को यदि remove करिवा ये काम करी मेंडल Emasculation. बायोलॉजी हमें पढ़ू हमें बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते मेंडल जो Emasculation. आगे कौन कहूँ ये जो हमें ताकू बजे पी प्लांट रे मेंडल करथिले एक्सपेरिमेंट पढ़ाई थिवे सर अछि तो सेकंड ईयर अछि सर पढ़ाई थिवे पी प्लांट रे एक्सपेरिमेंट करिसंती. पी प्लांट इट इज ए वर्साटाइल प्लांट. मु पी प्लांट को कहबी इट इज ए वर्साटाइल प्लांट. आउ जने आसी बसिगला. अच्छा it is a versatile plant. It is a bisexual ये 9+1 stamen गोटे होची कार्पेल 9+1 stamen गोटे होची कार्पेल. हमें चाहिले stamen की रिमूव कर दे पारे इजीली. ताको कौन थी जो ये डायडल्फस कंडीशन ये 9 यूनाइटेड 1 फ्री जो stamen नौटा यूनाइटेड था गोटे फ्री इजीली रिमूव करि परबो. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ anthers from flower bud before anther dehisces in order to initiate hybridization is called emasculation, pollination, geitonogamy, tagging. Emasculation से जानी नतले मेंडल 1856 रे मेंडल एतरे एक्सपेरिमेंट करथले से होचंदी बायोलॉजिकल साइंस के किए हेल्प करछि. आमे आज बायोलॉजी पढुचे मु सबले कहे दुईटा तीनटा लोक मजगु आमे बायोलॉजी आज एई वर्तमान कहूजे दिस इज द किरण मजुमदार सह कहिसंती ये लास्ट टू डिकेड जाईची ये डिकेड रो स्पेस रो जा सरी जाईची कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रे जाईची. वर्तमान होजे बायोलॉजी रो डिकेड. बर्तमान जहाँ काम होउची जेते टीका काम होउची सब बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की मु कहबी दुईटा लोक जो गोटे 19th सेंचुरी जने 20th सेंचुरी गोटे लोक होउची 19th सेंचुरी जे होउची मेंडल किसी बायोलॉजी रे ताकर इंटरेस्ट नथला. ताकर अंक रे भलो थिला स्टैटिस्टिक्स. से इमास्कुलेट करथले से चाहिले रिमूव कर दोतले सेल्फिंग एंड देखुते प्रथमटा होउची पेरेंटल जनरेशन एटा होची क्रॉसिंग. तापर F1 जेतेले होई जाउची सेल्फिंग करूचंदी. सो क्रॉसिंग कला माने इमास्कुलेट करथले गोटा ये को रिमूव कर दोतले स्टामेन को रिमूव कर दोतले कंप्लीटली. तेनु से सेतेले करथले 64 रे से कहले. तेनु मेंडल आरंभ कले बायोलॉजी से 1665 की एंटन वन लीवेनहाउस के रॉबर्ट कॉक किछि नहंती जने माइक्रोस्कोप बाहर कले जने बैक्टीरिया कहले माइक्रोस्कोप डेवलप कले से देखि पारले. हमें छोटो जिंस को बड़ करी देखि पारलु.
किंतु तापरे ए मेंडल जो रीडिस्कवर 19th सेंचुरी माने बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 1901 ने रीडिस्कवर हला आ द्वितीय लोक होची मु कहे लास्ट सेंचुरी सबुठ बड़ काम बायोलॉजी रे होची 19th सेंचुरी बड़ काम होची मेंडलिज्म मो हिसाब रे मु सब आड़े कहे मेंडलिज्म हो सबुठ बड़ काम होची 19th सेंचुरी बायोलॉजी रे किछि बायोलॉजी के जान नथिले 20th सेंचुरी सबुठ बड़ काम होची कोटा कोटा आपण माने कहि परिबे बायोलॉजी रे सबुठ बड़ काम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर 1953 1864 66 1953 यही दीटा होची लैंडमार्क होची दीटा सेंचुरी वर्तमान में यही स्टेज को बायोलॉजी आसी ये जो डिकेड कहउछन कमिंग डिकेड्स आर डिकेड्स ऑफ बायोलॉजी रो डिकेड समस्त बायोलॉजी पढ़िबे बायोलॉजी सबु पाठरे नोबेल प्राइज पाउछन फिजिक्स रे काम करूछन बायोलॉजी रे सो ए सेंचुरी होची सेमतिका तेणु से दी जण लोक तांकरी जोगु से जो 3 जण जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बाहर कले क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आउ जो ये मेंडलिज्म यही दीटा होची लैंडमार्क होची दीटा सेंचुरी वर्तमान ये तो सेंचुरी चली देखा जो फ्यूचर कहबो मे बी कोविड में भी ये लैंडमार्क इन ट्रिपल फ्यूजन जानी स्ट्रक्चर मु एम्ब्रियो सैक रे करथि स्ट्रक्चर इन ट्रिपल फ्यूजन तादरे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होची मेल गैमेट फ्यूजेस विथ मेल गैमेट का सहित फ्यूज करूची सिनर्जिड्स पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल हां पोलर न्यूक्लियर सेल एंटीपोडल्स एक सेल मु जो चॉइस देउची ता विदुर कहबे सिनर्जिड्स सेंट्रल सेल एंटीपोडल सेंट्रल सेल ताले सार मैडम माने बढ़िया जानछथि तेणु पिला बढ़िया करिवे व्हिच प्रोसेस डज रिजल्ट इन जाइगोट को प्रोसेस रु जाइगोट होउची को प्रोसेस रु ए सिंगामी बी ट्रिपल फ्यूजन सी पोलन रिजेक्शन सिंगेमी डी सिंगेमी yes which one is a triploid structure egg cell embryo प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मु जानबर मु जो चॉइस दोची ता भीतर कोंतो तापर आपण माने पचारियो मु कहबी which one is a triploid structure egg cell embryo zygote primary endosperm nucleus प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस which is a unrelated pair कोटा unrelated pair syngamy zygote zygote embryo primary endosperm nucleus endosperm primary endosperm nucleus zygote प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाइगोट लास्ट ऑप्शन सर लास्ट ऑप्शन primary endosperm nucleus zygote because primary endosperm nucleus is triploid that is diploid that is a triple fusion product this is a syngamy product double fertilization product yes sir. Which one is an example of free nuclear endosperm which one is an example of coconut water coconut kernel coconut water resinous grain bean seeds coconut bean water seeds coconut water one of the following has no persistent seed coat abitrु कार persistent seed coat नहीं rice wheat maize castor maize नहीं rice wheat maize गोटे टाइप रो castor is different which is a correct sequence megaspore mother cell megaspore embryo sac
एक सेल मार्क कर दिए मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक एक सेल एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर एक सेल Sir, first have embryo sac, then megaspore mother cell, then megaspore, then egg cell. yes first hauji megaspore mother cell undergoes reduction division forms four megaspore in linear tetrad from a megaspore develops an embryo sac and inside the embryo sac there is one egg cell so taku emtia pila ku debe order pila emtia question takara iri poduchi which is unrelated pair kota unrelated pair stamen pollens mu jo choice do ta bhitar kon stamen pollens carpel ovule embryo sac egg cell pollen grain megasporangium Pollen grain megasporangium. Pollen grain megasporangium. Next, which is unrelated pair? Calyx tepals, corolla petals, androecium testamens, gynoecium carpels. Calyx sepal. Sorry. Tepal कौन? Out sir. हमें कागु tepal कहिबा. Sorry sir. हमें tepal कागु कहिबा. Tepal. Sir, where sepals and petals are not clearly identified. Yes. When petals and sepals and petals are not differentiated, we call it perianth. Perianth. Individual members of perianth are called as the tepals. Tepal. Individual units. ଯେତେବେଳେ सेपाल और पेटल को डिफरेंशिएट करि न होबो हमें तो कहया पेरियांथ पेरियांथ रो इंडिविजुअल यूनिट्स जेंति करोला रो इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज द पेटल्स कॉलिक्स रो इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड एज द सेपल्स सेम द पेरियांथ रो इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड एज द टेपल यस तेनो एटा कैलिक्स रो नुहे एटा होची पेरियांथ रो तेनो दैट इज योर आंसर इज करेक्ट which is the correct sequence in the formation of free nuclear endosperm. Free nuclear endosperm. Primary endosperm nucleus, vacuolation, free nuclear division, cell organization. Cell organization, primary endosperm nucleus, vacuolation, free nuclear division. प्रथमटा होची मु भाबुची बोधे प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus ना प्रथमटा नुहे द्वितीयटा नुहे प्राय तापर वैक्यूलेशन और फ्री एंडोस्पर्म आगो न्यूक्लियर डिवीजन हबो सेल ऑर्गेनाइजेशन सेकंड हो जी सेल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वैक्यूलेशन फ्री न्यूक्लियर नुहे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हां थर्ड टा ये सुनंतु थर्ड टा मु जेते कहू सेटा बोधे ठीक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वैक्यूलेशन सेल ऑर्गेनाइजेशन तापर सेंट्रीपेटल वॉल फॉर्मेशन हबो नुहे की जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रे जो कोकोनट रे हमें कहू कोकोनट वाटर इज फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पार्ट तार जोटा कर्नेल टा कोन सेल्युलर एंडोस्पर्म दैट इज एंडोस्पर्म किंतु कोन आइची प्रथम सेल वॉल फॉर्मेशन आइची मु जा को सुनंदु प्रथम हला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हला इनिशियल स्टेज थिला खाली पानी थिला ता भितरे पानी थिला तापरे हला वैक्यूलेशन हला जो तापरे सेल प्लेट फॉर्मेशन हला सेंट्रीपेटल पेरिफेर रु टुवर्ड द सेंटर सेल प्लेट फॉर्मेशन हला आ पूरा प्लेट फॉर्मेशन नहीं जदी बहुत दिन हम नोडिया को रखी देबा ताले से जो नोडिया आइ जो दैट इज फ्री पूरा कंप्लीटली सेलुलर रही जीवो से कंप्लीट हेई न थाई बोली हमें त पॉइड को इतले सरी गला पानी कमी कमी का आसीबो ताले सेल प्लेट फॉर्मेशन कंप्लीट हेई जीवो सो वैक्यूलेशन पर सेल प्लेट फॉर्मेशन थर्ड टा होची करेक्ट ऑर्डर एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम कोड एम्ब्रियो सैक डेवलप करे ओव्यूल जाइगोट प्राइमरी एंडोस्पर्म ओवरी embryo develops from embryo
Embryo develops from ovule, zygote, primary endosperm, ovary. Zygote. Yes, zygote. Zygote, when zygote becomes cellular, आमे ताको प्रो एम्ब्रियो एम्ब्रियो तादरो तापरे जावो सीड हबो जावो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ embryo consists of embryonal axis and how कोन अछि epicotyle hypocotyle cotyledons plumule. Yes. Embryo consists of embryonal axis and epicotyle hypocotyle cotyledons plumule. Embryonal Cotyledons dita part अछि गोटे embryo रो dita part embryonal axis and cotyledons. Embryonal axis dita cotyledon name जतिबो embryonal axis जति एमति हला axis मु करि पने चित्र एमति दीटा cotyledons हो embryonal axis गोटा जतरे गजा होउसी embryonal axis and two cotyledons. Plumule can be called plumule को हमें कौन कहि परिबा what is plumule? Shoot apex. Shoot apex. Plumule is Shoot apex. yes stem when a primary stem से develop plumule. Plumule is stem tip. A plumule can be called as root tip, stem tip, radicle, cotyledons, stem tip. Stem tip. Stem tip. A plumule and radicle. जितना गोटा germination होउची दीटा part develop होती. Plumule and radicle root system. What is present in the cotyledon of grass family? Cotyledon of grass family. What is present? Scutellum. सेटा बॉयरे अछि मुझे बॉयरु देइची embryonal axis, hypocotyle, epicotyle. Scutellum, epicotyle, hypocotyle. Yes, that is scutellum. Scutellum. Coleorhiza is the covering of radicle and root cap, shoot apex and leaf primordia, radicle and root hairs, radicle and shoot apex. Coleorhiza is the covering of. Boyre say ये boyre अच्छी जा मु तार देइची radicle and root cap. Yes, radicle and root cap. Coleorhiza तार opposite है ला coleoptile. Coleoptile is the covering of radicle. Shoot apex and leaf primordia. Leaf primordia. Shoot primordia, no leaf primordia. Shoot apex. Leaf primordia. Nodes. Fertilized ovule is very simple question. Fertilized ovule is fruit, endosperm, embryo, seed. Embryo. Seed. Fertilized ovule is fruit, endosperm, embryo, seed. This is a simple question. Please answer it. Fertilized ठीक question. Fertilized ovule is fruit, endosperm, embryo, seed. Fruit, sir. Virus. Fertilized ovule seed है सर seed कौन भटो? Fertilized ovule is seed. Fertilized ovary is fruit. Fertilized ovule is seed. मन रखो तो fertilized virus. Fertilized ovule is seed. कौन गीता आसलान का? ये कौन है ला? सर के बॉस रे अछन? Fertilized ovary. Fruit sir. Ovary is fruit, sir. Ovary. Fruit sir. Fruit. Fertilized ovary is fruit.
Which pair is incorrect? Which pair is incorrect? Non-albuminous seeds, no endosperm. Albuminous seeds, endospermous. Non-albuminous seeds, endospermous. Persistent nucellus, perisperm. को pair ता ठीक नुआ. Non, এটা negative question. Non-albuminous seeds, no endosperm. Albuminous seeds, endospermous. Non-albuminous seeds, endospermous. Persistent nucellus, perisperm. Non-albuminous seed endospermous जोटा আছে সেটা। Yes. Non-albuminous seeds, endospermous. Non-albuminous means no endosperm. Endosperm जार not है, ये non-albuminous. Albuminous seeds means endospermous. Persistent nucellus जार था है, इसे इधर fruit रहता है, राइबो, तब कौन दे perisperm. Which pair is unrelated? P, non-albuminous. Maize, albuminous. Castor, albuminous. Groundnut, albuminous. Groundnut non-albuminous। Groundnut albuminous। Groundnut albuminous টা ভালো। Yes. 47. Which one has non-albuminous seeds? Barley, wheat, beans, rice. Beans, sir, beans। Beans. What are the requirements for a seed to germinate? It is germination fundamental question. Air, water and temperature। Air, water and temperature. More सेमते तो देइनी वो moisture, oxygen, temperature देइची, moisture and oxygen देइची, moisture and temperature देइची, moisture, water and light देइची. Moisture, water and light। Moisture, mu water को नहीं moisture Oxygen, light। Moisture, oxygen, mu आउ air देली नहीं. Oxygen और light। बॉयरे सेमते आची oxygen. Moisture, oxygen and light। Oxygen, light, sir। Moisture, oxygen and temperature. Moisture, oxygen, light। Matured ovary same question अच्छी थी. Matured ovary is a fruit. True fruits develop from thalamus, integuments, nucellus, ovary. Ovary. Which is जदि integument रे ovary नहीं हो integument रे develop कला. इटा true fruit है परिवन. जदि integument रे ovary अच्छी, ovule अच्छी ovary नहीं. Which is not a correct statement about seeds. Which is not a correct statement about seeds. Have better adaptive strategies for dispersal to new habitats. Have sufficient food reserves for young seedlings. Produce no new genetic combination which may lead to variation. Provides nourishment till photosynthesis starts in a new plant. Which is not a The third pit। Produce no new genetic combination which may lead to variation. Eta. Yes, sir. Yes, sir. Not for us। Third term पढ़ुचो. Produce no new genetic combination which may lead to variation. Eta. Eta ठीक. Sir। प्रथम डाला have better adaptive strategies for dispersal to new habitat. New habitat को पढ़ाई जो चल जो adaptive strategy अच्छी तरह. Fruit रहता है, seed रहता है. अच्छी। Have sufficient food reserve. Food reserve रहुची. कितने food तक हमें रखी परुची बहुत समय. How would I provides nourishment till photosynthesis starts in a new plant. So a good adaptation last time way. Seeds formed without fertilization is called seeds formed. Sir, again। Fruit form वाले पार्थनो करती हो.
seed formal. Sir, apomixis. Apomixis. Yes, sir. So choice is parthenocarpy, apomixis, syngami, triple fusion. Allah. Which is not apomictic process. Quota apomixis process nuhe. Seeds formed by sexual reproduction. Egg diploid, but no sexual reproduction. Egg diploid. Egg diploid na haploid? Egg ka haploid cell. Yes. I somewhat like that. Eggs are haploids. Nucellular tissue produce the embryo, no sexual reproduction. Nucellular tissue haploid na diploid? Diploid. Nucellular tissue sir Yes, diploid. Time kahi lagila. Bhabyaku lagila. Embryo sac chhada au samaste hochandi diploid. Embryo sac ro cell guda khali central cell nuhe. Au sab cell guda diploid, haploid. Sabu cell, synergids, egg cell, antipodals, au ye dita polar nuclei fuse egale central cell egale, that is binucleate. By dita nucleus rauchi, fuse ho nahanti. So it is a ame goibe gote type ro ye hochi mixture, complex structure. Kintu eta binucleate condition. It completely diploid no binucleate condition. Tenu seta ko ame daunu ये होची seeds which is not a apomictic process found from sexual reproduction. Sexual reproduction hele jeta sexual reproduction. Reproduction hele ame ki mixes kaiba. आपको कुछ आपको apomixis ताको कौन कहिबा? Amphimixis. Sexual reproduction hele amphimixis. Yes, amphimixis. Apomixis without fertilizer mixing होनी mixing hele ताको कहिबा amphimixis. So seeds formed by sexual reproduction like amphimixis, egg diploid, haploid no है, माने reduction division है नहीं, माने कोई cell चाहे fuse कर जाएगी. Egg diploid but no sexual reproduction. Diploid होती sexual reproduction नहीं. Nucellular tissue produce embryo, no sexual reproduction. Seeds develop but no sexual reproduction. Seed होती किंतु sexual reproduction नहीं. Anemophilous flowers are pollinated by weed, water, animals, man. Anemophilous flowers. Anemophilous wind sir, wind. Wind sir. Male gametes are formed from tube cell, generative cell, stalk cell, primordial body. Which gamete sir? Tube cell. Generative cell. Generative cell. 55. Which cell undergoes? Which cell of embryo sac does form zygote? Synergid, antipodals, central cell, egg cell. Egg cell. Egg cell. So in the 55 ta question achi gota egala gota achi kon discussion. If you have anything to ask me. Sir, adventative embryo ne ଟିକେ describe कर दियंतु. Gota Adventative embryo ne. Adventative embryo ne sir ଟିକେ. gota lekhi ho kuch gota. मते टे सुबुने टे ठीक से कोन चार्ट लिखी जंदी अच्छा लिखी जंदी कोडी मैं कोन तू लिखियो चार्ट लिखी दियो तो कोन कोटा को लिखी दियो सेटा कौन गोटे yes adventative embryo polyembryo no adventative embryo ये तो ए बोइरी नहीं होते एड़ा काउंसिल बोइरी अच्छी सर polyembryo ने अच्छी है तेरे अच्छी सर सर आओ एपोस्पोरी आउट के डिस्क्राइब कर देबे एपोस्पोरी लेके polyembryo नहीं अच्छी embryo seed reporter
Apospori. से वर्ड रु आपण माने तार मीनिंग बुझी जिवे एडवेंटिटिव एम्ब्रियो नि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो फॉर एडवेंट माने तार ये हबो एडवांटेज रे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो एडवेंटिटिव एम्ब्रियो नि पॉली एम्ब्रियो नि एटा होची एटा पॉली एम्ब्रियो नि मींस कोन आमे कहू जे गोटे एक सेल रु गोटे एम्ब्रियो होची जाइगोट होची जाइगोट रु एम्ब्रियो होची जदि एक सेल होला सिनर्जी रु गोटे डेवलप करि गला ओटा न्यूसेलर जे होला किबा एक सेल डिवाइड कला एक सेल फर्टिलाइजेशन पर डिवाइड कला आमे जदि कहू जे ट्विन होचंदी सेमदी जदि बेसी एम्ब्रियो डेवलप कला एटा पॉली एम्ब्रियो नि से मेनली ए सब केस हुए बेसी जिम्नोस्पर्म केस रे एंजियोस्पर्म रे कम हुए सो से जो एडवांटेजेस जोटा एडवांटेज रे तार हला सुविधा पाई एटा हला एडवांटेटिव एम्ब्रियो नि सेमदे apospori apogamy development of gametophyte without formation of spores आमे कहूचे सबरो दीटा जनरेशन अछि ओटा होची स्पोरोफाइटिक जनरेशन ओटा होची gametophytic जनरेशन gamete formation without spore formation is known as the apospori spore formation है apo जेमते apomixis माने apomixis माने कोन amphiomyxis माने दीटा को मिसिबे amphi हबो मिसिले किंतु apomixis जले गोटा माने एब्सेंट रहिबो ये मेल फीमेल फ्यूजन हबोनी सो दैट इज amphiomyxis apomixis सेमते apospori gamete formation without sporophytic stage spore stage so that is apospori एडा सब लोअर प्लांट रे ये रे लेखा होची बट ये बोय रे सब कथा नाही अने मु भाबुची आंको पे नाही कोडी मु देखुनी ए बयटा मु तो पढीची ए बोय रे नाही apospori apogamy एडा सब नाही एडा विविडली डिस्क्राइब होईची सीएचएससी बोय रे जोटा ये बोय किंतु ए बोय रे सब नाही ए बोय रे हार्डली केते पृष्ठ अछि आरंभ होला 19 रु सरीला 39 रे 20 पेजेस 20 पृष्ठ अछि आउ कोन कहबो हु कैन सी पेरिस्पर्म और पेरिकार्प difference कौन So perisperm is the nucellus which is present after the fertilization inside the seed, and pericarp is the outermost covering of the fruit. पेरिकार्प जो तीनटा लेयर थे तो कौन कौन Epicarp, mesocarp and endocarp. आए तो सब जानि जंदे मु कोन कहियो you know everything No sir. true आमे ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का कहियो So true fruit means which is developed from the ovary with fertilization, and false fruit means which is developed from the thalamus. ए तो सब जानि जंदे हां सो फॉल्स फ्रूट को आमे कोन कहियो ओटा फॉल्स फ्रूट रे एग्जांपल कहिले Apple sir, apple, pineapple are the false fruits. मु जदी कहबी कस्टर्ड एप्पल ए जोटा होची कोन ताको ए कहूची काजू नट is also false fruit sir. ट्रू फ्रूट होची फॉल्स फ्रूट होची कोटा ट्रू फ्रूट कोटा फॉल्स फ्रूट So cashew nut is the false fruit. जोटा काजू ही बिक्री हो सेटा ट्रू फ्रूट ना फॉल्स फ्रूट काजू कहले मंजीटा कि सर मंजीटा हेले सर मंजी तो सीड प्रेजेंट अछि तो सीड प्रेजेंट थिले भी थैलामस ता स्वेल कर जाउची सोलेन थैलामस एटा होची फॉल्स थैलामस ता सोलेन होची जोटा को जूसी पार्ट आमे खाउचे जोटा अछि के काजू प्लांट बेस रे जोटा अछि जोटा बिक्री होची सेटा ट्रू जोटा बिक्री होची काजू बिक्री होची दैट इज ट्रू सेटा ट्रू दैट इज ट्रू सर हां सेटा ट्रू आ जोटा जूसी रसाळ जोटा सेटा थैलामस सोलेन नै जाईची
Yes sir. सेटा तार टिप रे रहउची Yes sir. सेटा false अटे. अच्छा फ्रूट केते रकम रो अछि ए बही रे नाही हम बही रे बहुत अछि ए Sir, सीबीएसई fruit रे to- बहुत कम Sir, according to true and false development of fertilization, that is two types. That is, one is false and one is true. And according to seed present, there are many multi-seeded fruit also, one-seeded fruit also. सिंपल फ्रूट होजन दुई रकम रो कोन कोन Multi-seeded and one-seeded. ड्राई फ्रूट एंड Dry fruit and ड्राई juicy केते fruits. रकम रो अछि जे जुइसे ये नाही ए सब पाठरे नाही एठी Dry fruit से and जो juicy कहले fruits. पार्थेनो कार्पी पार्थेनो जिनेसिस या भीतर डिफरेंट Parthenoge- पार्थेनो कार्पी होचे फ्रूट फॉर्मेशन सबले मन Yes, रखो sir. पार्थेनो कार्पी इज फ्रूट फॉर्मेशन जिनेसिस इज द Oh, प्रोसेस New फॉर्मेशन living organism for us. हां Parthenogenesis occur inside जिनेसिस the एंड पार्थेनो animal. कार्पी तेनु से टिके ये कले सेटा ठीक अछि जो सीडटा इमिडिएटली हमें शो करिबा हार्वेस्ट करिया केते सीड धान को नै से एकले गजा आइ जाउची किंतु अच्छा होबनी काई होबनी ओडा धान को हमें हार्वेस्ट कले अमल करी जदी इमिडिएटली बुणीबा धान रु होबनी गछ हो गछ होबो किंतु फळ होबनी न होई पारे न होई भी पारे काई होबनी न होई भी पारे बेसी चांस काई आमे धान को सीधा रखू वर्षे रखू तापर जाई कि धान को पुणी नेक्स्ट सीजन रे बुणु पुणी से जो पीरियड टा Embryo कोन is कोन not जो properly पीरियड टा धान mature. को रखंती Dormancy period. Dormancy. यस दैट Seed dormancy. सबळे सीड रो गोटा डॉर्मेंसी दरकार गोटा सीड रो डॉर्मेंसी दरकार से डॉर्मेंसी के हमें ब्रेक कर देई परिबा केमदी आर्टिफिशियल वी कैन ब्रेक इट धान रे कोन होची आमे जो धान को वर्षे रखुचे डॉर्मेंट करी रखुचे से समय Yes, हमें sir. कोन करचे धान रो आज बायोलॉजिस्ट मु तो कहबिनी प्लांट साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हमें कोन करचे ताको dry tightly करचे। dry करिके रखुचे. व्हाट इज विविपारी Sir, विविपारी vivipary means which give birth to a baby. विविपारस प्लांट गोटा एग्जांपल कोटा No, sir, माने no idea. जर्मिनेट करी पड़िबो को केस रे No, sir, no idea. मैंग्रोव प्लांट रे केते केते जगह रे देखा जाय धान मंजी जदी झड़ी पड़ला कि धान मंजी रहिला तादरु भी गजा बाहर किंतु से विविपारस नदी हेउची बेसले होची मैंग्रोव प्लांट होची विविपारस आउ सब हेले आमे सब कोन विविपारस ना ओविपारस We are viviparous, sir. विविपारस सुअर हां ठीक है ओविपारस की बर्ड्स Viviparous are Birds birds, are sir, birds, reptiles. किंतु मु मनुष्य को पार्शियली विविपारस काहे कि ना मनुष्य पूरा डेवलप होई बड़ आसुनी डेवलप होई कोन पूरा आसी आमे गोटा छुआटा कहले गोटा गां दरकार गोटा छुआ को मनुष्य करे कहले ए विलेज इज नीडेड टू मेक ए चाइल्ड टू ग्रो गोटा पिला को बढ़ेबा कहले गोटा गां दरकार कोनती गोटा गां Yes, sir. दरकार हो एमाने भलो जानिचंती बट पिला माने केमिति मु जानिनी बट यू हैव टू वर्क हार्ड गोटा कॉन्सेप्ट होची एक ये होची जे वर्तमान सिचुएशन होची वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन 2 वर्ष लागिलानी प्राय 2 वर्ष पाखापाखि हो तेणु यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड पिला नांती मु बहुत सार बहुत कथा शुणुची केते सार अछंती कि जाई पिला घर को जाई पढौचंती घर को जाई क्वेश्चन दे आछंती ताकनो उत्तर करी आनुचंती आउ पिला को सार अछंती कहउचंती गले से माने कहउचंती कोविड कैरियर आपण गाँव गार्डियन मान कहउचंती वर्तमान जो सिस्टम है पिला टीचर भितर गुरुकुल रिलेशन एवं डेवलप करिया पड़ो सो ये Yes, sir. ये एमितिया पाठर कॉन्सेप्ट हो जो सार करूचंदी काम जे आपण मानको पूरा इन्वॉल्व होगा पड़ो पिला बिना परीक्षा दे पास कर भल लगुच
हमको भल लगुनी No, sir. केना दे पास हां ओलंपिक हला ना 20 ओलंपिक 21 रे हला ना 20 परीक्षा 21 परीक्षा होबनी नई पिला पास तादरे पिला एजिटेशन नो तेणु यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड केमिति करिवे कोन करिवे यू हैव टू डेवलप बट मो आइडिया होची इन्वॉल्वमेंट आपण माने जीवे मते गोटे जने टीचर पाई जने मते कहले मु 5 लाख टका मते समाज देइची ताको डाकी गिरी समाज देला एगरा आमे गां भी जाई पढौची पिला सो यू हैव टू टेक की केमिति आपण इनोवेट करिया पड़िबो केमिति करिया पड़िबो बट दिस इज गोटे जनरलाइज सार जो काम करचंदी ये जो सिस्टम करचंदी नुवा पैटर्न ने परीक्षा होची किछि क्वेश्चन हम कहलु वी गिव सर्टेन आइडिया केमिति मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पड़िबो खाली ओपन एंडेड की खाली क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पड़िबोनी सेंटेंस कंप्लीशन पड़िबो अरेंज थिबो एई कि थिबो कोटा ठीक बाहर करिया पड़िबो सो केते रकम रो अछि यू हैव टू क्रिएट यू हैव टू हैव सर्टेन आइडिया के माने हमें किछि मेसेज देलु यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड आगु केमिति Yes, sir. हबो सेटा आपण मानको काम ये हला मोर सरी गला पुणी आउ केबे ये हबो मोर आउ तीनटा अछि बट जो मेसेज आपण पाइले जति बेसी कहंतु जहा बहि रे अछि पिला को सेति कहंतु जति एंट्रेंस फेंट्रेंस बोल जे को होता अधिका कथा कहंतु एडवेंटिटिव हला पोस्पोरी हला पोगामी हला जा जा हला ताको कहबे किंतु अपोमिक्सिस एम्फिमिक्सिस कहंतु एमदा किछि किछि आपण माने जानि चंदे कहंतु एंड केमिति पिला आपण भलो करिवे आपण जो स्टॉप पाई चंदी आपण रिजाइन कर देवा कथा न पिला भलो खराब पिला रो भलो हेबे बहुत खराब पिला मु देखि मो संगे पढुतले जे बहुत भलो होई चंदी सो यू आर द मेकर्स ऑफ देयर डेस्टिनी थैंक यू Thank you, sir. Dear colleagues, now we come to the end of this today's session. And after 7 or 8 days, we'll be having again repeating botany part. So thank you very much for your patient participation from 9 a.m. till now. So good day. Yes, sir. Okay, thank you very much. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.